Hello and welcome back to Chasing the Target. India have won the series convincingly in the end. 91 runs, a brilliant victory, a great performance, and a great individual performance. What an innings from Surya Kumar Yadav. Sky was just absolutely smashing it today. Faz, how are you doing, man? I'm in the sky, baby. क्या मजा आ गया यार वो बैटिंग देख के। वो हर 2-2 मिनट में, लेकिन वो रोहन कौन है यार, वो मखानी मखानी जो भी थे उसके बारे में बोल रहे थे। whenever he was sweeping and falling off, they kept talking about that Rohan guy, but man, Surya He's a Kumar, famous West Indian yeah, batsman who was, and Sunil Gavaskar named his son after him. what a shock, but That's still, why. That's why Rohan guy, Sunil Gavaskar kept yeah, he mentioning. can He's the sweep one who anything, kept bringing it up. huh? That's why he But kept yeah. bringing it up. Yeah, but man, apart from bringing it up, Surya Kumar brought it up. He took it everywhere around the ground, man. क्या next level batting थी, 360 degrees. Rightfully उसको जो title दे रहे, everywhere, man. Like I think Sri Lankan bowlers एक time पे हैबत खा लिए कि कहाँ डालूं मैं, क्या करूं मैं, fine leg रन दो, third man रन दो, deep mid wicket रन दो, extra cover तो उसका favorite दिख रहा, उसके घर का मसला दिख रहा, extra cover में कुछ. Every 2 minutes he keeps going and like hitting it across above extra cover, but yeah. Sensational performance, and yeah, bowling department also acha dale. Like I won't criticize them overly. From the comeback that they did in the second T20, yeah, it's a very good performance. Yeah. I mean, good captaincy as well. Good bowling changes, good field placements. It was a much better performance, and this was their best performance in the series. I felt that the first one also they didn't deserve to win that game, but it's about fighting it out, getting the result. They got the result there, and then now at the end of the series they put in their best performance, and also it goes to show कि जो आप इंटेंट के साथ खेले लास्ट गेम में, इट वर्कड आउट हियर. अगर वो सेम इंटेंट अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, आप 225 के ऊपर नहीं मारते थे. आप लास्ट टाइम भी ऐसी मार के यू टुक इट close. Yeah, there were mistakes and everything, but the intent was the same this time around. Yeah, you had the anchor in Shubman Gill, which was a bit of a difference, but still, you played that attacking cricket. You made sure that keep high, we're going to go for it. They lost a lot of wickets in the middle overs. If you notice, after the partnership between Shubman Gill and Surya Kumar, Huda came and went and Hardik came and went. They lost wickets, but I don't mind that because you're trying to take the score from 200 to 225. For that, everybody has to contribute, not just Surya Kumar Yadav, and I like that approach. That was the main difference for me in this game, and in this series, that with this young team that they're looking to attack every single delivery, and it's going to cost you matches. I'm completely fine with that, but today you saw the upside of it. Yeah, 100%. I think there was no other option for them when like people like Deepak Huda and they were coming. There were like four overs left or something left on the charts, So they had not a lot of batting, time to waste and stuff. I think that's what Hardik Pandya and Dravid. Dravid also at one point told Shubman Gill to start going. We were talking about Dravid's communication with the team, and I think there was one point where Rahul Dravid also told Shubman Gill to start go after it because he did waste quite a few balls. He was like 24 or 22 or something, and he was not able to get the shots in. He was not able to find the gap, but the strokes that he played, bhai, thode to bahut zabardast classic shots there. Yeah, go ahead. नहीं मगर वही है कि लाइक आई डोंट माइंड दैट अ बिट बिकॉज़ लास्ट टाइम लोग बोल रहे थे एंकर जरूरी उन्होंने कर दिया फिर एंकर राइट ही डिड हिज लिए पार्ट तो सही खेला उन्हें बिकॉज उन्हें ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लिया एटलीस्ट इट वुड हैव एडेड प्रेशर टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हिच आई थिंक दैट व्हाट द सिचुएशन डिमांडेड फ्रॉम हिम सो आई थिंक नहीं लगना भी एक तरीके के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लूंगा मैं बिकॉज अगर शुभमन गिल आउट हो जाता तो सूर्य कुमार पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता फिर वही बोलते कि भाई उसको नेचुरल गेम नहीं खेलने दिए उन्हें आउट ऑफ हिज वे ही हैड टू गो एंड बी डिफेंसिव so this is what I was talking about in the last episode like in the last T20 as well that bhai we need an anchor we need a Virat Kohli we need a someone who can pace this innings quietly and let the other guy take guard वही मिला आपको आज एंड लेट्स गो इनटू द आई टेस्ट whoever joined us thank you so much make sure you like and subscribe और आपके सवाल भेजते रहिए कमेंट्स भेजते रहिए हम लेंगे एंड लेट्स गो भेज दो भाई आज तो सूर्या कुमार यादव जो कर रहा जो भेजना है भेजो भाई आज लेट्स गो इनटू द आई टेस्ट आपके लिए सवाल देखो हमारी पब्लिक नहीं छोड़ती अंशुल भाई जुट गए अब वापस ही वाज रेगुलर थैंक यू फॉर जॉइनिंग बताओ सूर्या वर्सेस अब कौन ज्यादा डेंजर सूर्या वर्सेस एबी मेरे लिए देखो सूर्या तुम सूर्या मैं सूर्या वर्सेस एबी नहीं पढ़ा मैं सूर्या अब डेंजर ज्यादा लग रहा है मैं वैसा पढ़ा और ये देखिए एबी डिविलियर्स का हिसाब से अगर अपन देखें एबी डिविलियर्स के लेवल को पहुंचने को भी टाइम है थोड़ा सूर्य कुमार को आई मीन ही हैज एवरी शॉट इन द बुक ही हैज एवरीथिंग बट
एबी डिविलियर्स फील्डिंग में, कैप्टेंसी में, ही हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट. उन्हें टेनिस, रग्बी, आप जो स्पोर्ट दे दो, उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, तो उन्हें हर चीज खेल लेता मेरे हिसाब से. सूर्या कुमार हैज इट इन हिम, बट कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट आई एम वेटिंग फ्रॉम सूर्या कुमार राइट नाउ. सूर्या कुमार, द थिंग इज एबी आल्सो पूरे फॉर्मेट्स में करा, लगातार कंसिस्टेंटली करा, लाइक 10-15 साल. टेस्ट मैच रहने दो, वनडे रहने दो, एबी हैज द एबिलिटी टू प्ले 2 of 50 balls एंड आल्सो 50 of 15 balls. तो उसके पास जो अलग गियर से वो अभी सूर्या के पास है नहीं. सूर्या एक फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया राइट नाउ. सूर्य कुमार इज द बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. उसकी 3 सेंचुरी हो गई 6 महीने में, तो आई एम नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग दैट, आई एम नॉट गोना आर्ग्यू विद दैट. लेकिन एबी डिविलियर्स भाई अलग लेवल पे है, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन था. सो या, आई नो एवरीवन लव्स टू कंपेयर, I also love it, so I don't mind asking, like, answering these kind of Yeah, there's questions. no problem in comparing, but I think it's a little bit too early, and I think Surya Kumar came in too late in the game when you compare it to an AB. तो AB डिविलियर्स थोड़ा जल्दी पीक हुआ एंड जल्दी आया, बट मेरे लिए सूर्या कुमार अगर थोड़े और कंसिस्टेंट रन्स रहे उसके एंड आईसीसी फॉर्मेट्स में खड़ा उतरा, देन यस डेफिनेटली वी कैन गिव अ शाउट. बट अगेन मैंने AB बहुत ज्यादा हाई बार सेट करा हुआ यार. AB की अंशुमन बात भाई के पास अल्फाज नहीं ऐसा दिख रहा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई थिंक ही स्टन्ड विद दैट सूर्या कुमार इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स. एक छक्का उन्हें जो थर्ड मैन के ऊपर मारा था, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में जो मारा, मेरे को समझ में नहीं आया वो. यू कैन से इट वाज अ वाइड यॉर्कर. दैट्स नॉट अ इजी डिलीवरी टू हिट बाय द वे फॉर 6. सलमान भाई का फिजिक्स, सलमान भाई की फिजिक्स ही पूरी आ जाए सूर्या कुमार की. सलमान खान जैसा फिजिक्स डालता था कोई रेस 3 में ऐसा था भाई, नेक्स्ट लेवल वो शॉट. देन द वन ओवर फाइनल लेग, आई एम टेलिंग यू दे weren't having any room to go hide. श्रीलंका के बॉलर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज हम ना क्या कर लेना, आज क्या डालना, ये आदमी क्या खा के आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. Yeah, and I also want to shout out Rahul Tripathi. I think he set the platform perfectly. I know उन्हें नहीं convert करा, 50 नहीं मारा, मगर उन्हें, because there's an early wicket और फिर शुभमन गिल 8-9 बॉल खा लिया था, I think, before he got off the mark, right? So like there was a lot of pressure there. उन्हें आके छक्के शुरू करा, बाउंड्रीज मारा लगातार, जो सीधे मारा था कर ले, जबरदस्त टाइमिंग के साथ जो मार रहा था उन्हें. He set the platform, and Surya Kumar didn't have an issue at that time to like keep. It wasn't like on him कि भाई मेरे को रन रेट बढ़ाना है. It wasn't like that. Like he already run rate बढ़ चुका था. He had the base, and of course he took it to the next level. Surya is a more experienced batsman. He like converted his start into 100, which Rahul Tripathi couldn't do. But the जो base ने उसने set किया, I think hats off to Rahul Tripathi. Rahul Tripathi coming back from that innings in Pune, he must have been disheartened. अरे यार वो आने लगे, यहाँ भी लग गए थे, एंड यहाँ काफी बेहतरीन शॉट जो ने स्ट्रेट बैट प्रेजेंट करा. देखो शॉट जो 6 गया था, जबरदस्त. उन्हें इन द वर्ड्स ऑफ हर्षा बोली, गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द विलो जो बोला था उन्हें भाई, सॉलिड शॉट था वो. एंड त्रिपाठी का इंटेंट आप देख लो, उन्हें ही वाजंट लाइक मैं नया हूं, मैं ऐसा चिल करने वाला हूं. उन्हें गया, उन्हें अपना बता दिया कि भाई ये पिच पे अपन बैटिंग कर सकते, एंड ही ओपन द गेटवे फॉर लाइक अ सूर्य कुमार टू एक्सप्लोर द एंगल्स एंड द शॉट्स. तो यार त्रिपाठी वाज डेफिनेटली गुड. अनफॉर्चुनेट शॉट मार के आउट हो गए उन्होंने. ही वाज कॉट गलत मार दिया वो, सीधा क्या खेल रहा था. अरे बैगन में क्या कर दिया यार बोल के. He was annoyed and he wanted that 50. I don't think उन्हें वैसा बोला होगा. मे बी एकदम से सीख गया होगा. अभी तक नहीं खेले उन लोग हैदराबाद में. मे बी दिस ईयर नहीं बैगन बोल तो उसके 100 that too at number 4. Also he cannot be compared to AB. AB was doing it when no one else was, and AB was doing it in different everywhere. formats. Every country, everywhere. Yeah. Welcome to the stream. I hope you're doing well, and please do like, share, and subscribe. Your support is valuable. Thank you so much, Techie Liv. You're one of our originals, and whoever joined us, really appreciate it. Please like and subscribe. We'll get you the latest content, whatever cricket content, whatever comments, questions you have. Please ask us, even if it's not about cricket. We'll try and answer it. कुछ दिन बाद सूर्या से बॉलर बॉयकॉट कर लेगा, ऐसे ही दिख रहा भाई. बिकॉज परेशान होता है ऐसा बैट्समैन जो AB, बटलर और सूर्या, द वे दे यूज द क्रीज, आपको समझ में नहीं आता किधर बॉल डालूं. आप आउटसाइड ऑफ डाले तो उन्हें पॉइंट के ऊपर उठा ले, आप सीधा डाले तो उन्हें फाइन लेग के ऊपर स्कूप कर रहा है, थोड़ा और शॉर्ट डाले तो उन्हें स्क्वायर लेग के ऊपर उठा रहा. सो ही कैन हिट इट एनीवेयर, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर. नोटिस, आप अगर नोटिस करें, आई एम प्रीटी श्योर आप कर लिए होंगे, बट उन्हें जो एंटिसिपेट करा, उन्हें एक फर्स्ट बॉल, आई थिंक इट वाज करुणा रत्ने, उन्हें शॉट डाला, उन्हें मारा, फिर उन्हें फुलर लेंथ में गया, उन्हें वो भी मार दिया. सो ही नोज व्हाट द बॉलर इज गोइंग टू बोल द नेक्स्ट बॉल आफ्टर गेटिंग हिट. उन्हें परेशानी में ऐसा मालूम है अभी नहीं डालने वाला, उन्हें पहले से हटके उन्हें रेडी हो गया शॉट के लिए. So that's what you guys were also saying कि भाई anticipation जबरदस्त. He reading the mind of the bowlers. Bowlers आखिर क्या कर लेना आज, क्या तो भी या तो दुआ पढ़ के फूकना, करना क्या आज स्काई के ऊपर.
But yeah, Also, उसका एडजस्टमेंट बहुत क्विक है बिकॉज ही हैज अ शॉट फॉर एवरी डिलीवरी, हैज 3 शॉट्स फॉर एवरी डिलीवरी. तो जहां पे भी बॉल है उसको प्रॉब्लम नहीं है. लाइक आई थिंक अ फ्यू शॉट्स ही प्री डिटरमिन्स इट, भाई मैं इधर ही मारूंगा. बट अपार्ट एंड ही सेड दैट इन द पोस्ट मैच आल्सो कि भाई देयर सम प्री डिटरमिन्ड, लेकिन अ लॉट ऑफ द शॉट्स ही गोज विद द फ्लो ऑफ द डिलीवरी. जहां पे अगर आउटसाइड ऑफ है उन्हें वहां पे खेलेगा. अगर लाइक यू नो इफ इट्स फुल देन ही प्ले द स्कूप, if it's short he'll play the pull. So he does play according to the delivery. Of course you have to predetermine at times to play with the bowler's mind. वो तो उन्हें करता है, and he outstanding ability to do and that. wrist man, that wrist action that he has, ये जो कलाइयाँ ये है ना, चिट्टियाँ दूसरा गाना था मोड़े. चिट्टी कलाया चिट्टियां नहीं, खता लिख दे रहा हूँ भाई. Next level, man. Next level batting. I mean, I can't get over the shots. Probably, Apar mein jaise hai, we'll go back and watch that innings again and again and again. But yeah, coming to other people in the match, obviously there were other performances. You know, apart from, like, I can't say apart from Surya, because Surya ka performance clearly overshadowed everyone. Akshar Patel, player of the series, 117 runs, 3 wickets, discipline in bowling, batting. He's been amazing. Like, Akshar Patel's growth from like a couple of months to now, man. How good has it been? Outstanding. And the thing is, he's been brilliant in the red ball. Like, you know, that's where he started. Like in that England series, agar aapko yaad hai, after the Gabba, the England came in over there, especially in Gujarat, Ahmedabad mein jo matches ho rahe the, he was ripping it, and he was picking up fifers and everything. Wahan pe unhe shuru kara, and the way he's adjusted to the T20 format, I'm very impressed with his bowling. Firstly, because he's a type of bowler जो उसको करले लग सकते. And Australia में दिख चुका है वो. He did get hit in Australia, right? But in India also on this kind of wicket, he could have got smashed again. Like India, there are some pitches that he will like to bowl on, but this I don't think was a wicket that which suited the spinners or anything like that. But he managed to extract a bit of turn. Whenever there's a bit of turn, Aksar becomes dangerous. मतलब बेहतरीन bowling कर रहा था उन्हें आज. And batting wise also the range of shots. अब मेरे को ये बोलो कि अगर जब जडेजा फुल फिट होता आप किसको खिलाएंगे? बिकॉज आप दो लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर खिलाना, मतलब जो सेम प्लेयर है, वो तो आई थिंक मुश्किल है. मैं आई थिंक करंट फॉर्म पे अगर मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर को छेड़ूंगा नहीं ज्यादा. अगर अगेन जडेजा हैज टू अर्न अ स्पॉट इन द थिंग, आई डोंट केयर. मैं उतना भी जडेजा की सीट अभी अक्सर रिजर्व कर दिया. जसप्रीत बुमराह की अगर आप बात करें, जसप्रीत बुमराह हैज दिस बिकॉज ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉलर. इसका वैसे जैसा कोई बॉलर ही नहीं है, बट आपको जब रेप्लिका मिल गया है, बेटर नॉट अ बेटर रेप्लिका, प्रॉब्ली न्यूअर और यंगर रेप्लिका मिल गया है, तो आई वुड गो विद अक्षर पटेल, गिवन दैट he probably contributes consistently more with the bat at this point of time. और एक सवाल है, वनडे वर्ल्ड कप आ रहा, उसमें आप सूर्य कुमार और अक्षर पटेल को कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे? सूर्या को कंसिडर भी कर सकते हैं, अक्षर को भी कंसिडर कर सकते हैं, भाई मैं क्योंकि बता रहा हूँ आपको, इंडिया आप में है, इंडिया में है एग्जैक्टली. तो आप इंडिया में वर्ल्ड कप सूर्या के बिना नहीं खेल सकते वर्ल्ड कप. yeah, अगर सूर्या ये I फॉर्म don't में care है, if he gets out, bro. I don't care if he but I gets would out say first ball. I would want to try him out in one of the series, 50 over series. Why, before. bro? बटलर नहीं खेलता वनडे, ए भी नहीं खेलता वनडे. खेलता था तो खेलो, मारो. हाँ, बोलो बोलो बोलो. नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लो वो रिस्क लेके, रिस्क लाइक अगर उन्हें आउट होना फर्स्ट बॉल, टेक दैट रिस्क. बट ही इज द गाय हु विल टेक योर स्कोर टू 400 ब्रो. 450 भी लेके जा सकता है उन्हें. टुडे 225 जो भी 229 जो भी मारे उन लोग, बिकॉज ऑफ सूर्या, द वे ही एक्सेलरेटेड, द वे ही बैटेड इन 50 ओवर्स. आई डोंट केयर इफ ही गेट्स आउट लाइक 3-4 गेम्स अर्ली, मार के इररिस्पांसिबल खेल के. आपके पास है भाई केएल राहुल, विराट, रोहित, जो टुक खेल सकते. I want to see how his temperament would be in a 50-over match. I don't care how his temperament, I want the same temperament. Yeah, that is one thing. No, अगर उन्हें अभी तो सिर्फ 2020 खेला, आईपीएल खेल रहा है and stuff like that. 50 ओवर का भी फॉर्मेट अलग रहता. आपको पावर प्ले इंग्लैंड कैसा खेलते, इंग्लैंड कैसा खेलते वैसे ही खेलते. ले बशीर दे बशीर चूर, मतलब पहले बॉल से मारो आप. और ऐसा नहीं है आपकी टीम में पूरे प्लेयर ऐसे, एक ही प्लेयर है सूर्या कुमार. ही इज अ डिफरेंट प्लेयर ब्रो. एंड इमेजिन ही डज दिस ऑन इन 50 ओवर्स. टुडे ही वाज नॉट आउट. Yeah. And so he could have batted another maybe 10 overs. Imagine it's a 50 over game. What does he do? He scores a double century. भाई ऐसे प्लेयर रखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको. I don't care अगर उसका strike rate वो है, and he's in the form of his life. Of course आगे जाके we don't know what form he has. But the way he's batting, he has, this year is going to be his year again. I'm telling you, ये ऐसा प्लेयर रखो आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में. There is no doubt. With अक्सर you can still debate with जडेजा. आप बताओ मेरे को, सूर्या इंस्टेड ऑफ सूर्या आप किसको खिलाएंगे? श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे आप? किसको खिलाएंगे बताओ? And Rishabh Pant might not, we don't know if he's going to play or not. You don't have that aggressive batsman. सही है. आई मीन वैसा अगर मैं देख रहा हूँ, बट आई एम ओनली सेइंग कि भाई उसको थोड़े सीरीज मिलना 50 ओवर टू बी, यू नो, आदत लग जाना 50 ओवर्स की थोड़ी. 50 ओवर अगर उसमें उन्हें जल्दी आउट हो गया तो फिर
जल्दी आउट हो गया तो मौका दो, आई वुड से लंबी रस्सी दो। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि लंबी रस्सी नहीं देंगे अपन, बट यू नो हाउ द पब्लिक इज, अपनी जो माशाल्लाह अपनी सेलेक्टर कमेटी जो आज बनी है, वो कैसा रिएक्ट करते हैं उसको, वो देखना पड़ेगा ना। अभी चेतन शर्मा, दीपदास गुप्ता ऐसे लोग हैं अभी, तो वी कांट कमेंट ऑन इट, नो। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग दैट ट्रोलिंग दिस सिलेक्शन कमिटी, तो अभी नहीं बोल सकते बॉस अपन तो। दैट इज व्हाट, बट आई नहीं, आई वुड, मैं इसलिए अभी से बोलता रहूं। बेस्ड ऑन आप जो बोले, जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कराए, और मैं इमेजिन कर भी लिया और मैच भी देख लिया, आई वुड एंजॉय सूर्या कुमार इन 50-50, बट आई वुड आल्सो वांट टू सी हिम इन द टीम फर्स्ट, राइट। वो एक चीज है, अनलेस दे आर गोना ऐड हिम नाउ इन द वन डे स्क्वाड, व्हिच आई डोंट थिंक दे कैन डू, बट लेट्स सी, इंजरी अगर किसी को हुई, गॉड He has to फॉरबिड। play, bro. कुछ दिन बाद सूर्य ये तो ले लिए, गिल को मौका मिलेगा न्यूजीलैंड मिलेगा, T20 सीरीज में। मिलेगा, 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 मिलेगा गिल को प्रसाद मौका। Asadar Singh, best. Thank you, sir, for your compliment Yeah, about yeah, Surya as sure, an Indian. exactly, Chirag bhai. I would give this side one more series to get enough sample size to take a call. 100% sample size leke fir aap expect, you know, definitely you will be able to understand what quality of this team is, and how consistent this team is, what they can do in pressure situations. I think that the best thing about the side right now is, I mean, we are focused on individual brilliance, but there's also a collectiveness in this unit. Like एकता है, जो भी आप बोलो, बहुत ज्यादा एक हद तक है unity. डॉक्टर फूडिया आगे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। इंडिया जीतेगी, मेरा टाइम पास प्रेडिक्शन सही होगा, ट्रीट होना, वो पैसे हाँ ले लो ट्वीट आप। होना, हाँ ट्वीट होना, पूछे आप बोल रहे ट्वीट होना। Jadeja walks in for Huda. He bats better and bowls too. But would you have two of the same players, or would you go with a Washington Sundar, who is a right arm off spinner and left hand batsman? He gives you a different variety. So how do you do that? Like, will you have two of the same players, and will Jadeja and Aksar bowl in tandem? I don't know if that will work. It's just a And question. Maybe if yeah, that's and your if opinion. the pitch doesn't suit either of them, then दोनों को like ले बशीर दे बशीर चूर in your या words. दोनों, अगर दोनों लेफ्टीज बैट्समैन आ गए और दोनों को फिर एक एक दूसरे एंड से मारना शुरू कर देते तो क्या करते फिर आप? मुस्तफा भाई, ऐसा तो ऋषभ भी टेस्ट खेलता है, फॉर्मेट्स कैन बी मिक्स्ड, विल गो विद फैज भाई अप्रोच, गिव वनडे सीरीज टू स्काई। बट मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऋषभ टेस्ट भी खेलता, T20 वनडे सब खेलता है उन्हें। एंड टेस्ट पे वो लोग रोक रहे थे उसको कि भाई ऐसा प्लेयर रिस्पॉन्सिबल आप नहीं खिला सकते, उन्हें बहुत एग्रेसिव है, उन्हें हर शॉट मारने जाता है रेड बॉल में, उन्हें टाइम नहीं लेता। मगर आपको उन्हें सीरीज जिता दिया दो, एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी ऑस्ट्रेलिया मैं में। कैसा बोलता हूँ मालूम है क्या होने वाला है? अभी श्रीलंका की सीरीज अगर ये वनडे टीम अगर जबरदस्त क्लिक कर दी, व्हाइट वॉश कर दी, एक एग्जांपल, और विदाउट अ सूर्या कुमार, देन आप सूर्या कुमार को वो वनडे टीम में लाते कैसे? तो यू हैव टू मैं गिव हिम इसलिए लेके आता हूँ बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी, एंड आई टेल यू समथिंग, I'm not scared if he doesn't perform. You have to take the fear out, and this is what I'm seeing from Hardik, which I like. He doesn't care if they like, I mean, of course he cares, but the way he's playing this team, he's saying ki bhai, the way they're approaching, that if they lose a game it's okay, and I'm fine with that. You saw in the last game they lost, a lot of people were upset, even in this chat people came and said ki bhai शुभमन को निकालो, इसको निकालो, उसको निकालो। उन्हें बोल रहा भाई मैं सिमिलर टीम खिलाऊंगा और वही खेलेंगे, हम मारते जाएंगे, मारते। जो त्रिपाठी दिखाया एज इंटेंट, it showed that key, like even if they're under pressure, if some other batsmen are struggling, I will still look to hit. And then when Surya Kumar came and continued that, so they're taking risks. I'm saying why not implement that in one day? You don't need all your batsmen to play like that if you don't want to, but if you're going to compete with the likes of England, in like अब क्या हुआ सेमीफाइनल में T20 में, right? वन डे में भी यही होता, इंग्लैंड भी फिर से मारते। यू थिंक बटलर रुकते बिकॉज इट्स 50 ओवर? नहीं रुकते, बट मैं एक चीज वहीं बोलता से हूँ, यहाँ पे वही शुरू है हो ना बस, जाएगा भाई। अगर अब ये अप्रोच अभी नया है, रखो ये टेम्पलेट, बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर 50 ओवर का मैच है, मोर ओवर्स मोर थिंग, अगर अपन एक साइड तो चेसिंग आपके कर रहे पास हैं, जब रख देते हैं विराट कोहली है, केएल राहुल है जो सिंगल डबल खेल सकते हैं, आपके पास है वो प्लेयर। केएल राहुल अभी शुरू हो जाएगा झगड़ा, केएल राहुल नहीं अच्छा, है। दूसरा कौन? रोहित शुभमन शर्मा के है, बाद, हाँ शुभमन के रोहित बोल दो। शर्मा है आपके पास, विराट कोहली है, आप श्रेयस अय्यर है, रोटेट कर सकते हैं। आपके पास कौन है जो हर जगह मार सकता? इंग्लैंड में तो है, जॉस बटलर है। लुकिंग एट द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम इज I इंग्लैंड राइट understand, नाउ। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका जो मैं बोल रहा हूँ, आप you're 100% right and I'm with you on that, but the only thing is I would like to see how he adapts to that 50 over thing. I know he'll have the same approach, hopefully he has the same approach, but if you're going in an international series, I would want to see him in like Australia where there are bigger boundaries, बड़े boundaries में भी देखना है मेरे को। ये आज I का don't तो need to देखो, see him. I don't need to see him in Australia. The World Cup is in India. Let him play in India and then see. You should have put him in the Sri Lanka. I mean, not you. They should have put him in the Sri Lanka. He's not there in the squad. he's not there in the squad, I think. Yeah, this He's not. BS if he's not there in the squad, man. Like this That's guy what is the I'm best saying. batsman right now. Now, if we win this whitewash, then how do you just bring him inside? I know you will bring him based on ability, but how the Indian system works, we know that they're not going to be. वो नहीं करने वाले ना कि भाई आप ऐसा आपकी भाई आई नो ability. बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्हें नहीं परफॉर्म करा वनडे में, हम लोग बोले भी कि उन्हें जल्दी आउट हो जा रहा है, ये वो मैं समझ सकता हूँ वो बात,
ठीक है, मगर उसमें कौन कोई भी नहीं परफॉर्म कर रहा अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा इन दैट इनिंग्स एंड या a few innings here and there. Nobody really performed, so like you're going to take him out on that basis? No, man, he's the guy who will help you win the big games. I'm telling you, he will put pressure. Even the जो lesser opposition रहता है, right? Sometimes it's tricky matches हो जाते हैं lesser opposition के साथ, उन्हें है जो game निकाल सकता है, उन्हें हर जगह he'll play with the bowler's mind. So for me he's in. With Akshar Patel, again, I think he has a big good shout, because Jadeja is also injury prone, so maybe Akshar plays without even a competition. Sky is in the He ODI. is in ODI squad, Chirag Bhai Singh. Okay, then it'll be interesting. Then this is the opportunity. That's it, bro. He's going World Cup, man. That's what I'm saying. I'm surprised he was. You said he wasn't, but yeah, he's there, man. He has to be the best and worst players of this series. Best player Akshar Patel. Worst player अपने लिए, I would still say Chahal. Despite today, I would still say Chahal. That's harsh, man. I would go maybe Ishan Kishan. Yeah, Ishan Kishan, but like wicket keeper है तो you need him. So I mean, वैसा देख रहा हूँ. No, I'm not saying drop him. I'm just saying based on his performance. Yeah, but like for Chahal, he has nothing else he's bringing to the table, like what a lot of people said. And no, but he's not the worst player. What is the question? The question is worst back to back में तो like last over में भी 30 दिया, ये उसमें भी ठीक है. I mean, चलो maybe I'm being worst था तुम्हारे हिसाब से? नहीं, probably I'm being a little too harsh. वही बोल रहा हूँ मैं. Probably आज और लास्ट मैच मिला है तो ठीक ही डाला. ईशान किशन ले लेंगे फिर, I think in that aspect. But श्रीलंका के worst and best players. Daswan Shanaka best. Worst would probably be Dhananjay De Silva for me. कुछ भी नहीं करा उन्हें पूरा सीरीज. Maybe Hasaranga was also pretty poor, man, in this series. I expected a bit more. Last two games बहुत पिटाई हुई उसकी. If Ishan Kishan opens, might try Sky at 5, but Shreyas plays at 4 for me. He deserves it on merit. I mean, yeah, like he's done it in the format. It's hard to argue. Like one day, mein unhe acha khel raha, he's playing well, and maybe that short ball issue might not be there in India as much as it is there in Australia. So I can't really argue with that. But my personal liking, I would like to see Sky there, man. Yeah, like and this is the opportunity. Like I was saying this, I didn't know that he was in the one day squad. अब उन्हें one day squad में तो definitely ये मौका उन्हें utilize करना है. And we'll understand कि भाई then definitely he'll get an entry, free entry क्या on merit जैसा बोले. Definitely अगर उन्हें ऐसे ही perform करते गया श्रीलंका के against in this one day international, and if he ends up to score like a 200 like you said, भाई फिर तो आप आपका झंडा डाल देते हैं मैं तो वर्ल्ड कप में. Sky has not won us important. अरे आशीष भाई, I guess any important games T20 कप्स उठा के देख लो, 100 मारा है, but only bilateral में चलता. Big games he needs to prove himself. But apart from Virat Kohli in that Pakistan game, who has won you important games? Neither has Rohit Sharma, neither has KL Rahul, neither has Shreyas Iyer, nobody has. And out of them, I'm picking Surya Kumar out of the any day of the week. I'd put him in my team. Yeah, I think Mustafa के logic यहाँ पे इसलिए अच्छी है because he is someone who विराट कोहली वो भी कौन सा मैच जीता है? विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है नॉकआउट में. आप पूरे नॉकआउट हिस्ट्री उठा लो 2015 से, कौन जीता है आपको इंपॉर्टेंट गेम? MS धोनी भी नहीं जीता है आपको 2015 के लाइक से. 2013 was the last one that we won a trophy, right? If I'm not mistaken. कौन जीता है? It's not that. That's an Indian problem. That you can't put it on Sky like that. And the way he's playing right now is next level, bro. Like I understand, like his point is right. He has not performed in the biggest stages, and that's completely right. But who has? But I think इन्हें जितना भी alarming है उतना पहले भी नहीं था ना. Like in a few years, in a span of 2 years, I would say he's coming up, and he's coming up at the right time. This is his chance, like Mustafa said. This is his time to shine, and I think we need to give him that. And I think अभी के हिसाब से अगर आप ले रहे पेपर पे, Surya Kumar Yadav is a very required player, and he is one who's in the modern era, not a conventional old जमाने का खिलाड़ी नहीं है. So I think just तरीके से ये template of cricket change हो रहा, he's required in the team. Yeah, 100%. And he gives you something different. That's the main thing, right? उन्हें जो shots खेल रहा है and stuff, it's completely different. He's taking risks. उन्हें like basically he's playing with guts. Like he's doing stuff like I don't think many Indian players would do that. What they teach you. The only thing, if like a coach watches him, a traditional coach in India, भाई कैसा खेल रहा है, and he's playing with the what is he doing? He's putting his own like position on the line by playing like this. Because उन्हें कभी भी out हो सकता है. वही तो बोला उन्हें press conference में, you need to add pressure to yourself to get out of game.
And that's exactly what I'm doing. I'm putting pressure on myself and I'm trying to play these shots. Yeah, I would much rather him get out like what he like even in the semi-final he got out like that, right? He played a shot of Badrashi, he got out. I'd much rather he get out like that than KL Rahul and Rohit Sharma डर डर के क्रीज पे खेल रहे और फिर out हो गए. I would rather have that if you're giving me the option. That's why India lost chokers. Okay, yeah. So then that's it, right? Like it's not Surya thing; it's the whole team. Like it's not just But Surya India, Kumar. there are a lot more problems apart from like a player like Surya coming in. Then they need to fix that. Yeah, Like not, it's an it's not overall just thing. him thing, it's a collective thing. And like Mustafa said, if he gets out of you and he manages to get us runs in big games, then I won't have a problem as well. But only the interesting thing would be seeing him against the likes of Mark Wood and ऐसे बड़े बड़े बॉलरों के साथ कैसा करता वो देखना है मेरे को. Yeah, 100%. हम जीत ही नहीं, नॉकआउट जीतेगा कौन? But Kohli performance 92 versus semi-final. Yeah, look, Virat Kohli. Like I'm not going to compare him with Virat Kohli, but that's one player. You're talking about one player, Virat Kohli, who has 10 years. performed in a semi-final. वो भी मैच हार गए. उसमें Yeah. भी like people will start blaming other things and all that. उसमें भी आप मैच हार गए लेकिन right वो जीते तो नहीं वो मैच. But you're saying Virat Kohli, I agree. Like Virat Kohli is a match winner. He performs in big games. In knockouts, nobody has yet. So it's whatever. But apart from that, Surya Kumar, like I don't see what he's done wrong not to be in the one-day team or one-day squad. देखो अभी अगर सिचुएशन देख रहे हैं अपन, he is 100% owning up to his ability and I think he deserves a walk in. So अब वनडे इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले श्रीलंका के खिलाफ एंड आई थिंक वहां पे he has to prove himself कि भाई इन्हें 50 ओवर फॉर्मेट भी खेल सकता. ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, अब आप कितना उसको यूटिलाइज करते 10th जनवरी को अपने को मालूम होगा गुवाहाटी में. मैं आपको एक चीज बोलूं, what I want to see from the team is कि don't be scared of losing a game. अगर आप स्क्वाड सिलेक्शंस देख ले T20 वर्ल्ड कप पिछले दो, आप एशिया कप को स्क्वाड सिलेक्शन देख लो, ये वो आप सेफ गए, यू वेंट सेफ, राइट? यू टुक प्लेयर्स लाइक हु यू ट्राइड एंड ट्रस्टेड, दिस एंड दैट, यू डिडंट टेक रिस्क्स एंड योर अप्रोच आल्सो ऑन द फील्ड वाज रिस्क फ्री. And you almost lost to Bangladesh there and you got smashed by England. I'm saying it doesn't matter, like go for it, go play attacking cricket, and if you get all out or you lose, it's fine, but play attacking cricket, especially in the white ball. Yeah, bilateral temperament in an ICC tournament is what we need. आज जिस तरह से अपन खेले fearless cricket खेले आज, वो temperament अगर अपन ICC and the में fans have to understand that, right? Like fan have to understand कि if Ishan Kishan failed like that, it's okay because he's following a certain thing. What his captain wants him to do, he's following a certain thing. There's a certain thing, and if he gets injured or if he continues to not perform, then it's okay. You can replace him with a player. You can get somebody else in. You can get a Prithvi Shaw, and you have options. But the system needs to be कि भाई aggressive खेलो, attacking खेलो, out हो गए तो out हो गए. जैसा जैक क्रॉली को कैसा बैक करा उन्हें बेन स्टोक्स, एक साल लगा जैक क्रॉली को फॉर्म में आने, फिर पाकिस्तान में मारा उन्हें, एक साल बैक करा उसको. तो मैं वैसा बोल रहा हूँ. And it doesn't mean you have to back the player for 1 year. You can replace, but the attitude should be the same. What the captain wants. You want to play this style. आप tournament में भी खेलो, हार गए, मैं ले लेता हूँ responsibility. And we as fans like me, I don't mind if you lose games. And fair assessment होना चाहिए definitely enough amount of times. It's two ways that you look at it from a player's perspective. अगर आप देख रहे उसको इतना टाइम दिया हुआ कि भाई उन्हें फेल भी होना, एक्सपेरिमेंट भी करना, एक अच्छा सैंपल साइज, जैसे चिराग भाई बोले एक अच्छा सैंपल साइज दो उसको कि वो अपना एक्सप्लोर कर सकता ऑप्शन, देन ही विल आल्सो फील कि हाँ भाई मेरे को मौका दिए थे मैं नहीं करा, या मेरे को मौका दिया और मैं करा, आइदर वे. तो आई थिंक वही है कि जस्ट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लंबी रस्सी. एंड आई थिंक ये टीम जिस तरीके से अप्रोच था आज, वैसा इज लुकिंग लाइक दैट इन द बायलैटरल. बट वही है कि माइंडसेट जाके आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं चेंज करना. कौन भी आन दो, शाहीन आन दो, मार्कवुड आन दो, लग देंगे उनको. The topic is here. You said give Sky a chance and he will win us big games. My point is 2 World Cups खेल गया. Apart from smashing 4 teams, he didn't perform. जो chances मिले उसमें कुछ नहीं किया. The thing is, in the last World Cup, he did perform. Yeah, he didn't perform in the big games. You're right. I agree with you there. But Virat Kohli was the only one innings against Pakistan. Apart from that, nobody else performed. Not at least Sky performed in the other games. Nobody else performed. It was just Kohli and Sky. And वो भी you can say कि like what do you call it, in the big games, KL Rahul, Rohit Sharma, all these guys,
देयर आल्सो लाइक जब अफगानिस्तान आती है उन लोग मारे थे 2021 में, याद है 2022 में भी वो भी नहीं हुआ, मे बी रोहित शर्मा एक और 50 मारा होगा उन्हें वर्ल्ड कप में, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक ही डिड, बट you can say apply that to all the players. I'm saying Surya will give you the best chance because the way he's playing right now, he'll give you the best chance. वैसे तो कोई भी, apart from one Kohli innings, there has not been any innings in the last two World Cups, so like which has won you against a big team or in a big situation, right? So that's why for me it's not like he needs to be in this team. Sky getting out by attacking is much better than KL Rahul getting edge. Yeah, This is exactly. exactly what I said. मैं यही बोल रहा हूँ. This is exactly what I agree. I'm a Surya. I think he's Surya fan. So yeah, Sai bhai sahi hai. 100%. It's on point what you're saying. अब सब नहीं चला, सब अंडर परफॉर्म किए, बट स्काई तो क्या, जब चांस मिला फिर तो शॉ एंड सैमसन का भी बनता खेलना ऑन द पॉइंट दैट दे विल परफॉर्म. शॉ apparently from what I've heard and everything, he is have some other issues off the field, so That's I don't what know, Chirag bhai just put in. He has some issues. I think some addiction issues I है read something that he might उसका career विनोद कामली के वैसे चले आ रहा, parties yeah, कोई बोले थे विक्रांत गुप्ता या कोई बोले थे नहीं ये बोले थे, I on don't know. sports like he has some issues, that's why he's not getting selected. It's not just thing, there's some issues with him going on. इसीलिए आते हैं भाई के पहले तो इसलिए नहीं कर बॉल उन्हें 100% बोल्ड का होता, इधर उधर दिख रहा है क्या है. हाँ, तो वही है लाइक यू नो साउथ अफ्रीका की इनिंग्स पर्थ में सूर्या की कितना मारा था, उन्हें आउट हो गया था उसमें जल्दी. साउथ अफ्रीका ने जुलाई में नहीं याद आ रहा मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट मैं वही बोल रहा हूँ. देखो आप ठीक है, आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, उन्हें नहीं परफॉर्म करा बिग गेम से ये वो, मगर लुक एट द पॉजिटिव्स फ्रॉम व्हाट ही इज प्रोवाइडेड. उन्हें ही स्मैश्ड 100 in New Zealand, he smashed 100 in England. 54. There you go. He had an innings against a big team. So what I'm trying to say is, look at the positives. What does he bring? He brings a crazy shot selection. He gives fearless attitude. And those games, like, he's still trying to attack the good bowling. Maybe sometimes he's not good enough. Maybe that extra bounce, Haris Rauf got him. That's fine. I'll take that, because if you look at his innings in the last 6 months, he's done it in different conditions. So he has talent, man. You can't say कि भाई ये नहीं है player talent नहीं है. He has that. You want him to score in the big innings. Hopefully he does. You have to back him, and hopefully he does. That's all you can. One more thing also, Mustafa, I think in that T20 World Cup, like you said, there was no one else performing apart from Virat Kohli, is because it's also the reason why Sky was like, see, Sky needs an anchor also, and Sky wasn't getting an anchor. In this series, I saw a little bit of maturity where he changed his templates. I think it was a learning for him in that aspect. कि कोई खड़े हुए नहीं है तो आपको भी खड़ना पड़ता. And that's one thing. I'm just looking at it from a very different perspective. I mean, he had Virat Kohli as an anchor. But like not every match, right? Like I mean, वो भी है कि भाई हर मैच में हर कोई परफॉर्म नहीं करा. कभी like इंग्लैंड के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं करे थे. तो वैसा बोल रहा हूँ कि आई थिंक वो भी एक इश्यू था स्काई के लिए. बट या स्काई नाउ आई थिंक इज अंडरस्टूड कि भाई कभी कभी आपको भी वो रोल ले लेना पड़ता, एंड वो करा उन्हें श्रीलंका के अगेंस्ट. तो मे बी इट्स जस्ट लर्निंग. Yeah, 100%. उतना नहीं सोचना, like, अब जैसा विराट कोहली, he's never won a T20 World Cup or an IPL. Does that mean आपने उसको बिठा देते, like आप नहीं खिलाएंगे उसको वर्ल्ड कप में? Right? He's not won a T20. कितने साल खेला उन्हें T20 World Cup? He has not won a T20 World Cup. He's not won an IPL. Right? Then you'll say, okay, it's not his entire fault and everything like that. I agree with that, but like, the same thing goes with Sky. It's not entirely his fault either. So like, it's a discussion to have. But right now, if he's the best batsman right now in T20 cricket, and I feel that he brings something different, and that's why he should be tried in one days, and go for it. I don't care if it doesn't, like 2-3 series he fails, then okay, fine, you have a discussion, you can drop him. But if he performs and he gets a big 100 in the one days, then he's cementing that slot in the World Cup. Yeah. G Fez, और किक है. Ashish comment, losing cost में 100 in England. I'm not saying he's not great. He's the best for us. All I'm saying, he doesn't justify himself in big games, which are World Cup. So ODI में he needs to adapt and play आराम से. The thing is, like, I don't mind, like, fine, he'll have to adapt at certain times and everything, but I'm saying you need a player who can go from ball one, and you're hoping he's that player. Unfortunately, we don't have players like that. Like a Josh Butler, he'll go from ball one, like Alex Hales will go from ball one. All these guys will go from ball one. So you need a player like that as well. You need an X factor, and he can provide you that, especially in Indian conditions. Imagine Sky is coming in, you already have a platform. He can take that score to accelerate the innings and also get you on that 350 mark. Yeah, 100%. Yeah. If playing in Indian conditions, I'll back him. Why not? In that I have 16 ODIs for your information.
he does have 16. I think Yeah, but right he now has he's two. in the I think he also has 250s in that, if I'm not wrong. But उन्हें 250. if he right now he's in unbelievable form. I'm saying don't worry if it's 50 overs. It's okay. I think the form he's in right now, I think he can translate that in one day cricket for sure. 100%. एंड अभी के हिसाब से भाई उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको खराब नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन त्रिपाठी साहब का बेटा आज क्या खेला भाई, त्रिपाठी साहब का भी बेटा लाइक Trivai, शॉट्स। Kalin भैया, कालीन भैया, Kalin, अच्छा, त्रिपाठी कालीन भैया का बेटा ओवर खेला आज, 2-3 शॉट्स तो नहीं देखे। कालीन भैया है वो। कालीन भैया मगर उसके जो जो शॉट मारा, दो छक्के सीधे, ओ वो हो मस्त था मजा आ वो। गया। And it's a very important innings in the context of the game because it was counter attacking. It gave Sky that platform to come and continue from that. It was a very quick fire innings. Didn't waste हम्म। any deliveries. They're really good. But also from Sri Lanka's point of view, bowling wise, were you disappointed with the way they वेरी bowled? I डिसअपॉइंटेड felt टुडे। that certain times they couldn't do much, but at certain times, yes, नहीं like नहीं नहीं, आई थिंक द लाइन एंड लेंथ वाज वेरी ऑफ, बहुत ज्यादा शॉट भी डाल रहे थे, फिर हैबत में आके फुल डाल रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग। मगर क्या करूं यार, उन्हें उन्हें वाइड अगर लॉफ्ट अच्छा डाला था वो। आप किसका कसुना रचिता का एंड एक और आई थिंक करुणा रत्ने या किसका की ओवर था लास्ट वाला, फोर्थ ओवर, they bowled good to Sky and they only got, I think, in the 18th or the 17th over they got 5-6 runs in the given the context of that thing. So they knew at some point, they knew कि हाँ भाई यहाँ डालना है, but फिर because Sky doesn't play straight a lot, he was playing यहाँ वहाँ and like सीधा उन्हें ज्यादा रन छोटे नहीं डाला। बाउंड्रीज को कर रहा था टारगेट। Exactly, छोटे बाउंड्रीज को टारगेट करता था, उसके हिसाब से जब डाल रहे काउ कॉर्नर के तरफ ये वो लंबा फील्ड प्लेसमेंट बहुत बुरे थे, शनाका के फील्ड प्लेसमेंट बहुत ऑफ थे आज, थर्ड मैन नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम, मिड ऑन को आप उधर ले गए, दैट वाज नो लाइक नॉनसेंसिकल था फ्रॉम श्रीलंका एंड दे जस्ट डिसोरिएंटेड टुडे एज अ टीम। लेकिन आई थिंक सूर्या कुमार जो फॉर्म में था 100% हैबत खा लिए होंगे, बट श्रीलंका इज बॉलिंग इन मच बेटर देन दिस। Guys, you're mentioning Oprah's heels, बटलर मिडिल ऑर्डर को कोई प्लेयर बताओ जो वन बॉल से मारता। आई विश ही स्कोर्स फ्रॉम बॉल वन है, लाइक हैरी ब्रूक है आपके पास, लिविंगस्टोन है, there's a lot of batsmen who do that. हाँ, स्टोइनिस मारा था फर्स्ट बॉल से, मार्कस है काफी middle order players you have like who attack like from ball one and play that aggressive game. If he I'm saying don't get scared. If he gets out, he gets out. It's okay. You have enough batsmen then to take care of it. Try something different. It's not like every batsman is going to do that. Let that guy do it, and he can play with the bowler's mind. It will help. And right now he's also has a very good partnership with Virat Kohli in T20s. If they can translate that to 50 overs, imagine the mayhem that you can think. There is players like that in the middle order. You will see like who will go from ball one, who will try to attack, especially there will be certain times he will have to shut up shop in the sense that he'll have to rotate, he'll have to take single double, of course, but it's okay, man. I think in modern day cricket you need players like this for sure, 100%. 100%, and yeah, it'll also be interesting to see him outside कैसा करता, and दूसरे bowler जो like हैरी ब्रूक तो टेस्ट मैच में भी नहीं रुकता यार, पाकिस्तान कैसा कर रहा था उन्हें एक बॉल वन से he was doing that. Gill playing maiden over, yeah man, that was मैं बोला क्या हो रहा है यार, maiden over उतने बॉल नहीं खा सकते, he has strike rate मैं वही सोच रहा था वो ओवर में कोई तो रन मार लेते तो टोटल एटलीस्ट वुड हैव बीन 235 230 समथिंग, बट खैर अब चलो हो गया सो हो गया। ही डिड प्ले अ फ्यू गुड शॉट्स, उन्हें जो छिक्का मारना चाह रहा था इतने टाइम से वो मारा फाइनली, वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट ओवर अक्रॉस द लाइन खेल के, दिस टाइम ही गॉट द टाइमिंग, एंड या इसकी टाइमिंग तो फिनोमिनल है लाइक उसकी बैटिंग की, एंड या आप क्या ही कर सकते, गिल साहब का बेटा है। See how he scores in the series. Next one, you can rate him whether he can play the World Cup or not. Man, the thing is, like, I don't have that much bharosa on the other players. Okay, like, I don't know, like, why you can have your opinion. Like, I might be completely wrong. If Surya Kumar doesn't play in the Sri Lanka, it doesn't perform in the Sri Lanka series, everyone will tell me, "Ki, bhai, you got it completely wrong." But I'm saying I would rather have that than like, what is KL Rahul doing, bro? Like, what are these other batsmen doing? Shreyas Iyer is susceptible to the short ball. He marra runs and stuff, but he's susceptible to the short ball. So every player will have weaknesses. I think right now, like someone is informed, try him out, back him, and see what happens. Try him out and keep this 20 over format or 20 over players जो आप बना लिए ये pack जो भी बना लिए आप रखो उसको भी, don't add anymore, don't minus anyone. मिक्स में खेलो, केमिस्ट्री बिल्ड रहती है उसमें, एंड आपको एक यू वॉन्ट फाइंड करे ने कहां से आ गया ने कौन है, तो ये चीज तो रहने दो एटलीस्ट ये मिक्स। Johnny Best on Maxwell, yeah, they also go from ball one. Maxwell in particular, I've seen like, बेस्ट तो कैसा है, शैतान था।
Barrister is a beast, bro. I think you have to put more price on wicket in ODI to a certain extent. But if one player is not putting a price and just going ballistic, it's okay. That's what I'm saying. You have other players because now No, it's modern it's cricket. It's changed. Right now, and it's 350, like 400 is the norm. So you yeah, have to try to match up to that. and And that if it's a wicket flat is such that yeah. Sorry, Mr. Sorry, go ahead. Flat wicket. no, say. I was saying even that wicket is such that bhai, either you get a 50 or a 100 or you get nothing, and that's a decent gamble to take in a one day international. Imagine getting 50 and 100, that's accelerating your total score to something else. अब अगर पूरी टीम मिलकर 230 मारी उन्हें एक 50 100 मार दिया तो आप 270 290 300 तो जाते ही जाते जाते वही है एग्जैक्टली वो बैक करो आप बैक हिम से कि भाई आप खेलो अपना नेशनल खेलते जाओ बिकॉज शॉट्स तो देख लिए एबिलिटी तो बहुत है भाई के पास मगर बैक करते जाओ एंड सी व्हाट हैपेंस राइट I think थोड़ा सा opening parry we need I think it's been a long time since we've seen our openers give a very good start, like a 80, 90, 100 kind of a start. That is also something I'm looking forward to. Maybe वो एक opening pair भी अगर अच्छी मिल गई, जैसे like जो अच्छा एक पेडिस्टल पे लाके छोड़ सकते गाड़ी को, जहाँ पे विराट कोहली भी आके फिर थोड़ा टाइम ले सकता, फिर सूर्या फिर इफ रिक्वायर्ड, तो वो भी बहुत जरूरी है. ओपनिंग उतनी ग्रेट नहीं रही अभी रिसेंट फॉर्म्स में अगर अपन देख रहे हैं. और मैं ये भी बोल रहा हूँ फैज अगर देखे 2015 और 19 का वर्ल्ड कप्स उठा लो, इंडिया वर द टॉप टीम इन द ग्रुप स्टेजेस, दे वर अमेजिंग राइट in both world cups. In the semi-finals they lost. So I'm saying that even when you're playing a certain style, you're putting a price on your wicket and everything, it's been successful for you, but the end result has been the same. So I'm just saying try something different. If it doesn't work out, it's okay. Like anyway you lost playing that, and you can always go back to that template because it's like it's easier to go back to that thing. I'm saying you tried to change the template, it didn't work. You played conservative in 2 T20 World Cups. In the 50 overs you played like conservative, you played safe cricket, it's not like you played out of the blue kind of cricket. So I'm saying try something different. If it doesn't work out, it's okay. Like it's fine. It's not like आप कोई like 10 ट्रॉफियां जीत गए anyway. सूर्या का बैक शॉट 140 बॉल पे लग सकता है क्या? बैक शॉट मतलब वो पीछे लग तो सकता है. I don't know if he's done it before or thing, but I think लग तो सकता. I've seen Butler do it to know कि 147 148 IPL में करा था, पीछे उसको वो करा था. Yeah, apart from Surya Kumar, what about आपके लिए comment है भाई. One day series starting, sandwiches गरम करो, Rohit Sharma is back at the wheel. Rohit Sharma is coming back. Sandwich गरम करो भाई जिम में. रोहित भाई जिम के रील्स डाल रहे, बर्गर का इमोजी है, तो आई डोंट नो बर्गर लेके यूं कर रहे हैं क्या कर. बट अर्शदीप का रिडेम्पशन, अर्शदीप जिस तरीके से वापस आया सेकंड ओडीआई के बाद, नो बॉल्स, आई नो वाइड्स भी डाला थोड़े बहुत, बट 2 overs 20 and he took 3 wickets, man. बहुत जबरदस्त कमबैक है वो मेरे लिए तो. Yeah, उन्हें देखो like he's the type of bowler, he can get hit. Like there are, if a slower ball gets picked, he will get hit. You can't assume him to always have economy of thing, but you have to back him because he's been so good. He's been performing really well at times, and he's been your death bowler, especially like in the World Cup. He tried his best. Against England it didn't work out, but there's so many games he performed against Pakistan in front of 90,000 people. The way he bowled there, it was outstanding. So this guy has a strong mind on him, strong mindset. So you have to definitely back him. You'll have bad days, it's fine, bro. अभी भी बोल रहे कि उमरान वाले जो बॉल डाला वो विकेट अभी भी रोल हो रही है कहीं जा जाके. क्या बॉल था यार, तीक्ष्णा को आउट करा, इतना कुछ बड़ा विकेट नहीं था, बट वो डिलीवरी यार क्या बॉल था, पूरी जड़ से उखाड़ दिया विकेट को उन्हें. He's a different player, right? अब उन्हें there's going to be games, उसको 10 ओवर में 100 पड़ेंगे, उसको 4 ओवर में 60 पर 70 भी पड़ेंगे, मगर no one likes facing that kind of pace, bro. And if there's anything in the wicket, he will exploit it. A bit of grass, a bit of ऊपर नीचे, bro. ऑस्ट्रेलिया में मजा आएगा इसको देखने में. Yeah, he'll be amazing to watch, man. Again, he's a player that I'd like to back, for a while. They have to manage his workload and take care of him, but that raw pace I haven't seen in a while, man, and consistent. Last 150 Munaf Patel was 145 or something, no? Remember Munaf Patel? एक आध गेम डाला, उसके बाद इंजर हुआ, बाद 120 हो गया था मुनाफ पटेल. Buumrah is fast. Buumrah is pretty fast. But Umran is someone who has the capability. saying रोहित में ओडीआई में रोहित के साथ 2 ओपनर गिल या ईशान होगा, is what he's saying. आपको ये लगता है कि it will be शुभमन गिल और ईशान किशन, या you will gonna bring ईश्वरन?
When one day Zisarwan is there? No, I don't think it is. Sorry. Yeah. मैं No, I मैं won't. मैं ODI का part भूल गया. हाँ. Probably Shubman Gill. He's performed right in the one days recently as well in Bangladesh. He scored 100. So I'll probably go Shubman Gill and see. But Ishan Kishan scored a 200 there. I just remembered. Left hand, right hand. Maybe Ishan Kishan. Also, it depends who your keeper is, right? There's no Rishabh Pant. Maybe Ishan Kishan is going to be your keeper unless they go with KL Rahul as keeper. So it Yeah. depends on that. Should we really look into bowling figures? They can be deceptive because target was too much. Yeah. या वो मारने के चक्कर में जाके मे बी आउट हो गए होंगे, वो भी एक फैक्टर है, बट लाइक इनिशियल ओवर्स भी बहुत अच्छे डाले. हार्दिक पांड्या also The fact it was a good batting pitch, so I would still look into the bowling figures. I would still look at the way they bowled and everything. It was a batting pitch. It was a good wicket to bat on. उन्हें कौन था जो रजिता जो आके उमरान को दो चौबे मारा. It shows it's a good pitch. हर्षा Yeah. बगले क्या हंसा ने बोला क्या करने वाला है, क्या करना, स्ट्रेट डाउन द गॉड. Oh wait a minute, he just answered Yeah. me. So it was पकड़ a गया. good pitch. So you have to commend the bowling, of course. They picked the अब wickets. मेरे को बोलो मुस्तफा भाई, बिगेस्ट क्वेश्चन, 4 overs 30 रन, हार्दिक पांड्या 4 ओवर डाल दिया, आप बोलो आप. भाई आज तो फिटनेस थी उसकी. I hope Mustafa don't raise question of Hardik fitness. I am with you on Hardik. Yeah, today he was there, bro. He was there. And he didn't get angry. He didn't show mood swings. No, I told you in the beginning, start of the show, मैं बोला उन्हें अच्छा करा captaincy. I like the way he. On the contrary, दसुन शैना का जब कसम रचिता का को 2 चौके बैक टू बैक पड़ा, उसके मूड स्विंग्स आ गए थे बीच में. So yeah. And शैना का आज फिर वो भी सवाल उठता है कि भाई शैना का क्यों नहीं डाला आज, क्योंकि मेरा मेन आर्गुमेंट है हार्दिक के साथ. people जब श्रीलंकन bowlers पिट रहे थे, then शैना का didn't come up to the rescue. Why? I mean, is it because of injury? He said he has a finger injury. हाँ, धनंजय दिसिल्वा भी है, तो उसको भी दला सकते थे. The last thing, I don't know, but with Chanaka, he said clearly, I didn't bowl because I have an injury and I'll bowl more in the one days. I can only bowl a few overs here and there right now. That's why. Manish bhai, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी बहुत इंप्रेसिव थी. Bowling impressive थी, batting बेकार थी. But I'm not going to criticize the batting. But for me, bro, it's when they say they compare him with Ben Stokes. That's the problem I have. He's not the best all-round in the world. अपन बोल रहे कि Sky to AB, it's not that yet. You can't put that thing, man. It's Ben Stokes is another level, bro. There's There's levels to this game. Rohit 200 आ रहा है, श्रीलंका आ गई. ओ रोहित शर्मा रोहित का पेट से आ रहा है या बैट से आ रहा है, वो बोलो 200 किलो. अरे नो देखो, कप्तान है भाई इंडिया का, क्लास बैट्समैन. Yeah, he's a very good. उसके काफी shots, pull shots. I love it. I love his shot selection and stuff. I love him as a batsman. Bhaiya, he's a Tekken charger, bro, after all. So, but yes, Rohit Sharma will be under the scanner captaincy batting wise. अब मेरे को ये बताओ, अगर खुदा ना खास्ता सीरीज हार गए one day, will people raise the question, हार्दिक पांड्या को बना दो white ball captain all format one day? Yeah, I mean लोग बोलेंगे, but एक bilateral के बाद आप ये 2020 में आप नहीं बोल सकते. I think रोहित शर्मा deserves certain more opportunity, but injury के ऊपर अगर रोहित शर्मा injured हुआ, then खत्म. फिर मैंने मालूम, he's not helping himself also. I will take Ishan Kishan. KL will never be in my team. And Joe, look, this is KL Rahul's been playing for a long time, and I think Ashish was talking about like big matches. This guy needs to be questioned first more than anyone, bro. This guy, like, more than Surya or anyone, this guy needs to be questioned. And like he's gotten a lot of chances. He's played plenty of cricket, has plenty of experience. He needs to perform on the big stage. He's the guy. The irritating part is that we know how talented he is. Everybody in this chat, सबको मालूम है KL राहुल के जैसा talent नहीं है. बट उन्हें बड़े मैचों में नहीं निकल के आता, वो इरिटेशन हो रहा. छोटे मैचों में मार लेता, बड़े मैचों में हक देता, वो एक प्रॉब्लम है. Why not Virat opening in T20 his favorite position as he finishes the game as compared to others? Opener Gill is not T20 material. I finish the game as compared to other opener. Gill is not T20 material. Yeah, Gill is not probably T20 material, but maybe he could turn into it. Let's just give him some time. I mean, आज काफी अच्छे shots मारे and he was an anchor. So विराट कोहली के ending में मुस्तफा बोलता he could be a possible replacement as an anchor. I mean, no one can ever take Virat sir's position, but yeah, Gill could probably try to fill his shoes. In that. Did you hear what Hardik Pandya said in the post match today? Very little. Why didn't hear the whole thing? He said this is the best T20 cricketers in India right now. Like that's what he said, right? The best T20 cricketers. So that gives me a feeling that this is the team for T20s.
Yeah, this team was something else, man. This is something because I don't think I do, I'm telling you, I don't think they'll देखो revert मैं to वो सब बोल रहा Virat because Kohli भाई will always have that option to come in, but I think right now this is the team. the team because the temperaments match, इंटेंट मैचेस, डर नहीं है, फियरलेस नहीं है, बैकिंग है, जो ये विराट कोहली के टाइम पे नहीं था. अगर आप विराट कोहली को यहाँ पे डाल दो ये टीम का लेवल अलग चले जाएगा बिकॉज विराट कोहली इज द सेम एग्रेसिव माइंडेड प्लेयर. So Virat Kohli has the right to come into this team directly if a Shubman Gill or someone doesn't perform. You know what I mean? आज बैटिंग 2 बॉल्स किया था, 4 ओवर डाला, ज्यादा टायर्ड नहीं हुआ बैटिंग करके. या तो But field तो 20 ओवर as you कराना answered भाई. my question. विनेश Fielding भाई तो सुन 20 लो. ओवर It's fielding not तो 20 ओवर कराना. if it's not for that final. Sorry, can you hear me? Yeah, As go you ahead. cut. I'll just come back. I don't know if it's you or it's me. If it's not for that final, Ben Stokes in T20 is a below average all rounder. भाई क्या बोल रहे भाई. He's not a, Ben Stokes is the greatest all-rounder currently in modern cricket. आप तीनों फॉर्मेट उठा लो. He's been outstanding, man. Like world class. Like what do you want from him? He scored that 50 in that final. He was outstanding in the IPL with Pune. When Dhoni took Pune to the final, they lost to Mumbai by like I think Ben Stokes had 100 in that IPL. If you look at one days, he's won the World Cup for you. He was the guy standing in the final. See the Test matches. Not only has he transformed the way, revolutionized Test cricket, but also his performance in that Ashes, one of the best innings you'll ever see. He's not a below average all rounder. Ben Stokes is just outstanding, man. रोहित एज बैट्समैन भी मेमोरीज में है, हाइलाइट्स देख लो. अब तो बस उसकी लाइफ तो मूड खराब करने वाला है. ही इज नॉट परफॉर्म्ड रिसेंटली, बट दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बांग्लादेश, that was really good. I like that one. That was one thing recent one I remember. But again, we need that consistency. From one question, will Virat come back in T20 or not? I think that he will come back, especially if it's a big tournament and he's performing like in other formats and stuff. I think he will come back. Like for now, I think they're sticking with this team and they're letting Virat Kohli, Rohit Sharma, and these guys focus on T20s and Test matches and one days. That's just my opinion right now. मैं कभी के राहुल को बैक किया ही नहीं. आपके लिए लास्ट सीरीज आई नो ही इज अ चोकर. पंजाब किंग्स एक्सपीरियंस क्या हुआ, निकालो उसको भी बाहर. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. उसको भी like he's the main guy. Like you have to talk about him before we talk about other guys. He's a perfect example of getting backed and not performing in big matches. Like you mentioned Surya doesn't only hit small teams. You can apply the same thing to KL Rahul over there. बेन स्टोक्स स्ट्राइक रेट T20 में 138 का है. भाई वो स्ट्राइक रेट के साथ वर्ल्ड कप जिता दिया. और क्या होना आपको. टारगेट 130 था, उन्हें उस हिसाब से खेल लिया. आपको क्या होना. I think in terms of consistently making noise and stuff, but when it's a crunch situation and bringing the team out of the gutter, वो चीज के हिसाब से मुस्तफा उसको इतना रेट करता है. I know as a player he's not been very consistent bowling, battingly, but when it comes to like finishing things, when the task comes in hand, that is when he shines the most. I think वो reason से मुस्तफा बोल रहा है. Yeah, man. Bro, that pace, the spell Naseem and they were bowling. How was that spell, bro? That was incredible. Huh? Yeah, कैसा 100%. था वो वो? तीन का तो चार ही रन दिया था उन्हें. तो यार उसकी वो जबरदस्त यार. I think which है. I'm very happy for Rahul Tripathi. He deserves debut cap way before this. I hope he performs and gets long rope. I hope so too. Like, I'm very biased towards him now that he plays for Sunrisers. But today I was very impressed with his innings. Again, like I mentioned, beautiful shots, crisp shots. Again, consistency will be something which will be monitored from him. But that's the difference with, Tripathi and Surya Kumar 3-4. They're going to look to keep attacking. They don't mind if wickets are down. They will still continue to attack. There are going to be times you're going to get upset with Tripathi and Surya Kumar, but I think it's fine. Like, it's okay if they get out early. Like in the other game, Rahul Tripathi got out early. Today he could have got out early. There was 2 one-handers which were missed. Right, they were very difficult catches. But if it stuck, then Tripathi would be in the dressing room way earlier. But he's taking those risks. He continued to bat, continued to score runs, and he set the platform from Surya. So I think one thing, the mindset that we have to develop is keep high. It's okay to lose. It's okay to fail. No problem. But you play a certain style and you stick with it, especially when you have the ability. आपके पास ability नहीं है, आप नहीं कर सकते वो, नहीं मार सकते वो shot on, तो फिर ठीक है. मगर आपके पास है वो ability. India is stacked with talent. So I said in T20, look, I understand where you're coming from consistency-wise. Ben Stokes T20 doesn't have the greatest stats or everything like that, but he's a World Cup winner. So he's a World Cup winner, bro. T20 he captain Easy and Test he captain Hardik and Stokes.
मैं समझ में नहीं आया क्या फैस। T20 की कैप्टनसी कैप्टन इजी एंड टेस्ट की कैप्टन हार्दिक एंड स्टोक्स. He's saying that T20 का जो कैप्टनसी is quite easier when you compare it to a टेस्ट कैप्टन. So he's saying हार्दिक एंड स्टोक्स के बीच में ये फर्क है अभी. I mean, I don't know. That's like for me, it's just Ben Stokes has done it in every format all the time. Like on the big stage, he's done it. Like can't compare, man. KL Improvement Rahul was a होना. son of 14, 15. And at bro, KL Rahul याद है हमारे फैस तुम थे हम लोग जब ग्राउंड पे थे उन्होंने हमारे सामने कैच छोड़ा था यू नहीं वर नहीं यू थे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट केएल राहुल और फिर हमारे दोस्त एक थे वी वर ड्राइविंग एंड केएल राहुल क्रॉसिंग द रोड एट दैट टाइम केएल राहुल वाजंट फेमस सो क्रॉसिंग द रोड इज गोइंग टू आईआईटीसी काकतिया या ही वाज अ सनराइजर एंड वो टाइम पे भी बोलते थे कि भाई इसको नको खिलाओ टी20 में थोड़ा सा टेक्निकल टेस्ट प्लेयर है बट देन ही इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग एंड टी20 वनडे जबरदस्त है उसके पास टैलेंट मगर प्रॉब्लम ये डर के खेल लेता बड़े ओकेजन्स में हार्दिक को भी टॉस जीता तो टी20 नॉकआउट्स में और चेस करना तो मे बी इवन ही विल हार्दिक को भी टॉस जीता तो T20 नॉकआउट्स में और चेस करने दो मे बी इवन ही विल विन यू द वर्ल्ड कप इज टेक्निकली लेट हिम विन द टॉस एंड लाइक let him हार्दिक को भी टॉस जीता तो T20 knockouts में and let him win the toss in the T20 knockouts and then let him chase and then maybe he can also win what Ben Stokes won basically. Maybe. I'm not saying you can't. But right now, there's No, a but difference. like what you said, you know, okay, by this team जो अभी फॉर्मुलेट हुई है एंड जिस तरीके से कॉल्स हैं एंड जिस तरीके टेम्परामेंट है ड्रेसिंग रूम में दिस लुक्स लाइक 2024 की तैयारी सॉलिड शुरू हो गई है एंड आई वुड नॉट चेंज वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द वे दे प्लान्ड आउट थिंग्स इन द 20-man स्क्वाड एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स यू नो होनिंग दैट टैलेंट एंड यू नो जिस तरीके से केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है जिस तरीके से बैगिंगनेस है जिस तरीके से एग्रेसिव इंटेंट है बस जाके आईसीसी में जाके डोंट ट्राई एनीथिंग डिफरेंट बायलैटरल का कॉन्फिडेंस आप सीधा आईसीसी में ट्रांसलेट करो वो तभी आएगा फैस्ट जब आप डरेंगे नहीं हारने का आप यू डोंट माइंड लूजिंग टू आयरलैंड लाइक आई मीन यू नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग बिग small games big games then that will come but the problem is you know there's so much technicalities into it and you start doing things differently you start taking responsibility शुभमन गिल क्यों खेला ऐसा आज because of his past two failures and there was criticism the way he's getting out and cross the line that's why he played now that's a kind of Indian mindset like in Indian culture in the Indian team in cricketing culture you've seen that when the pressure is on you revert to this conservative approach so that's something that you'll have to change and I think Hardik Pandya can do that because from what he's talking what he's saying is that bhai like I will still back you if you make me and he showed that like Arshdeep ko back kara and Arshdeep put like plenty of no balls in the last thing but he backed him and then he gave him the over in that game he gave him overs in this game so so आईसीसी T20 ईयर अवार्ड कौन लेके जाएगा सैम या सूर्या that's a tough one. Sam Curran, man. Sky fail in big situation is okay and perform in bilateral and people call him amazing and Virat fail in knockouts called choker double stand. Look, everyone will have different opinions of everything. You will have people who will criticize Surya Kumar Yadav saying he doesn't perform in big games. You'll have other people criticizing Virat Kohli. लोगों का है काम बात करने का they will criticize that will happen. No one will ever be satisfied no matter what. whatever the team is अगर पृथ्वी शॉ आ गया कल मैं और आशीष खुश हो जाएंगे दो दूसरे लोग गुस्से में आ जाएंगे बोलेंगे कि नहीं किसी और को खिलाओ सैमसन को खिलाओ so there will always no one will be satisfied with India you have so many options and so many things going on in Indian cricket there will always be somebody waiting in the wings you prefer him compared to the guy who's playing in the middle तो ये सब तो चलने वाला है like you know what I mean maybe in a few months we'll be saying कि अरे उमरान को बिठाओ उसको प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ maybe somebody will say that we never know yeah but like the thing is to just back your team no matter what Tripathi was class. That's the player we need as an openers. Two game and he smashed it. Second game and he smashed it. IPL is different, but international level when Ronak is down, the guy killed Sri Lanka and Sky took over. We also discussed this. This is a very good point about the opener thing. I think that's a good point. He is an option as an opener, and then you can fit in somebody else and one down. That's definitely an option. It's a good point. That's why we were saying no openers have not been clicking for India, and you know we're not getting those runs in bulk in the beginning and like. यूटिलाइज नहीं हो रहा अपन T20 वर्ल्ड कप में भी देखे अपन एक टाइम पे ये बोल रहे थे कि क्या रोहित शर्मा राहुल का प्रेशर ले रहा था T20 में कि राहुल ने परफॉर्म करा था या यू नो पावर प्ले में जल्दी मार के आउट होने की कोशिश में यू नो ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म बट या वी डू नीड थोड़ा बहुत गुड बैलेंस इन द ओपनिंग डिपार्टमेंट
तो ये And चीजें रिप्लेस हो जा सकते हैं। मेन थिंग इज द सिस्टम दैट यू प्ले, द स्टाइल दैट यू प्ले। ये सिस्टम, ये देखो ईशान किशन और 2-3 मैचेस नहीं खेला, उसको निकाल देंगे, आपके पास है ऑप्शंस, वैसा नहीं है। मगर एज यू हैव टू हैव अ कोर, यू नो, अ कोर 15 to 20, and there's a style of play that you want to implement. It doesn't have to be, it can be 25 people, but the way, for example, how England play, if you play like that, it becomes a bit easier. Then you understand what you want in a particular format, I'm saying, like in T20s. Or if you have a style like, you know, Virat Kohli, he always used to go fast bowlers. Fast ball, what happened in that Australia series? The fast bowlers got injured. Natarajan came in, Siraj came in, they came and think. But what did they do? They went for fast bowlers. They went for attack. You know, someone who have pace. They went for Siraj, who was bowling 140 clicks. They went for Natarajan. So that's the system. In test matches, I think Virat Kohli did a fabulous job there. But India have not cracked the code in one days and T20s. So that's what it is. You can replace players if he's not in form. ठीक है, ईशान किशन को निकालो, इसको निकालो, वो करो, मगर आपका एक आइडेंटिटी बनना चाहिए पहले, फिर उसके बाद आप ये सब करो. Yeah. Even in the last game, he wanted to score. एक मिनट. बुमराह का 3 फॉर्मेट में खेलना मुश्किल लग रहा है, या इंजरी काफी ज्यादा हद तक है उसके. 3 फॉर्मेट में खेलना थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन काफी अच्छी रिकवरी पीरियड रही है. वो इफेक्टिवनेस देखना पड़ेगा. वनडे इसमें है वो, एंड आई थिंक ही विल प्रोबब्ली प्ले द फर्स्ट वनडे जस्ट टू टेस्ट इट आउट. बट या मुश्किल तो लग रहा है, बट अगेन अगर रिकवरी कर दिया एंड एक्शन अगर कुछ, आई डोंट थिंक एक्शन में चेंज कर पाएंगे उन्हें, बट या इफ ही इज एबल टू sustain it and let him play 3 format. He might drop the T20 format or maybe the test format, maybe one or the two. Because if he doesn't, if he's gonna keep getting injured and like he's not fit, then you'll have to look for replacements. Even in the last game, he wanted to score quick and played that shot on one knee, but got a good delivery. Intent was good. Glad he didn't fail this game. Otherwise, chop and change kar dete. Yeah, exactly. And the thing is, he was about to fail in this game as well. There were 2 chances which were dropped one-handers. But still, the intent was there. He took that risk, and that's why, like whoever in this series, whoever played, I don't have a problem. Even Hardik Pandya, Deepak Hooda, the way they got out today, I had no issue with it personally. People will say कि भाई सूर्या इतना अच्छा खेल रहा है, उसको सपोर्ट दो, मगर T20 में उतना टाइम नहीं है सपोर्ट करने के लिए. आप भी मारते जाओ. Shubman Gill did the job already. He consumed those deliveries. He made sure that one end was there and Surya could bat. He did his job. Now you have 4 overs left. You go for all out attack, and that's what happened. अक्सर भी आके पहला बॉल घुमाया और उन्हें दीपक हुडा भी, तो वैसा चलते रहो. अक्षर तो 21 मारा 9 balls में, तो yeah. So today, nice to see Umran try Yorker. I hope we can see more Yorkers, but we have to manage well to fit enough for big matches because of his space. I agree, man. When he nails the Yorker, he nails it really well. I want him to practice that more and execute the Yorkers more. क्या बोलते हैं? 100% है. मेरे को वही है ना, लाइक वो वर्कर्स के अलावा भी आई वांट टू सी हिम इन ऑस्ट्रेलिया. बॉडी शॉट्स वॉट देना लोगों को, जैसा अपन आज देखते थे, लाइक हिटिंग द डेक एंड शॉर्ट बॉल डालना. ये वाला समझ गया. या हां, मैं कुछ और समझ रहा था. या मैं समझ गया आप क्या समझ रहे हो. वो इंस्टाग्राम देख रहे तुम आजकल. एवरीथिंग असाइड, हां पढ़ लो. Everything aside, what should be done with Chahal, I'm still not sure. Yeah, even for me, I'm still not sure if he's supposedly, you know, he's should be in the 11. Like Mustafa said, Kuldeep Yadav was there, and it's still unfair. You know, I know he's in the one-day international. I think Kuldeep Yadav will be given a chance over Chahal in the. Is he in the one-day squad? Chahal. Yeah, Chahal, Kuldeep, and there's another. Washington. Yeah, Washington is also there. So I think yeah, definitely Kuldeep Yadav को देना चाहिए definitely. मेरे हिसाब से because T20 में again थोड़ी बहुत predictable bowling हो गई थी towards the end of his spell. And again like आप ही mention कर रहे थे, and I feel the same thing कि fielding में उन्हें ज़्यादा नहीं कर सकता. He doesn't look very like you know fit या ज़्यादा देर उन्हें कुछ effort लगाता no doubt, but मेरे हिसाब से Kuldeep Yadav right now is very good. चहल का ये भाई, अगर आप उसको खिला रहे हैं पूरा साल वनडेज में, पूरी सीरीज, फिर आप उसको वर्ल्ड कप खिला दो. फिर अगर जो भी है नहीं हुआ तो फिर निकालना पड़ेगा. द थिंग इज द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स दे डिडंट, लाइक वन दे डिडंट पिक हिम इन द स्क्वाड, द अदर वन दे डिडंट पिक हिम इन द 11. सो उस हिसाब से लाइक अगर आप उसको दे रहे पूरा ईयर तो फिर आप उसको खिलाओ. बट इन माय ओपिनियन यू हैव टू लुक एट समवन लाइक कुलदीप और रवि बिश्नोई. दे आर bowling really well, and especially Bishnoi can be that unpredictable bowler because not many teams have. He can be your secret weapon. Yeah, and I just want Kuldeep to play because I want him back in the one day, because 2018-19 में कैसा डाल रहा था उन्हें. He was bowling phenomenal, and he came back very strong, and I think वो T20 का भी confidence आया था उन्हें. एक बार 50 में perform करा. We can bring him back in all formats. But yeah, it's just unfortunate जो उन्हें man of the match जिता के बिठाए, and you know अभी भी fair assessment नहीं है. But चलो चाहल को आप खिला दिया, आप देख लिए चाहल का क्या नतीजा हुआ. I mean
एवरेज बोल सकते हैं, नॉट वेरी वाओ, नॉट वेरी, बीच में रख देंगे उनको. एंड या लेट्स मूव विद कुलदीप इन द वनडेज फॉर नाउ. Mm-hmm. Eager to see Umran at Perth pitch. Yeah, that Yeah. would be incredible. Body shots. I think Bishnoi is better for T20. He more areas to contribute. Man, yeah, I agree. And Bishnoi has been outstanding, very consistent. Like even in the IPL, if you see, he's been bowling really well. In the Asia Cup, he bowled so well when he got the chance. Uh, yes, I understand leg spinner. He doesn't have a traditional leg spinner. He bowls all googlies and everything. Like, he's someone with that pace. He bowls the accuracy that he bowls. He will get you wickets, and it'll be difficult for a batsman to pick him initially. So at least try him and see what happens. Ravi Yep. Vishnu has been outstanding, man. You remember that spell he bowled against Sunrisers like a couple years ago, जो lockdown में हुआ था IPL. Sunrisers eventually went to reach the playoffs, but that game they lost, and it looked like we were knocked out of the season. उन्हें Yeah. उसमें लोग I think 120 कुछ defend करे थे पंजाब. क्या bowling करा था उन्हें. And since then he's been very consistent, Ravi Vishnu. क्या है कि वो सिचुएशन काइकू ने लेके आए, फिर अभी तक उसको वो भी एक सवाल उठ रहा बीच में, बट देखना पड़ेगा. बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट कुलदीप यादव टू बोल दैट वनडे में दागे फिर फाइवर लेना, बता देना बैगन कैसा कैसा बेटा भाई है. उन्हें हर फॉर्मेट में जब भी उसको मौका मिल रहा है उन्हें परफॉर्म कर रहा है एक साल से, मगर उसको खाली वन वन चांसेस इधर उधर दे रहे हैं कुलदीप यादव. कुलदीप भाई को दे शुड गिव हिम मोर चांसेस, दे शुड बैक हिम मोर एंड देन सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ या ही इज इन वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ. व्हाट इज ही 28 29, ही इज एट द पीक ऑफ हिज cricketing Yeah. career. So and he's improved, he's worked on himself. No doubt there was a period where it was a low for him, he was not in form, but now he's improved, so give him that chance. And he had a great year if you look at it whenever he got the chance. Yeah. Venkatesh Iyer, T20 open and bowling option. नहीं, opening bowling, open, अच्छा T20 open and bowling, yeah, he is an option, Venkatesh Iyer as well, but Bro, there is a lot of options भाई. अगर अपन वैसा देख रहे तो भाई अगर मगर वरुण, मैं एक चीज बताऊं, ऐसे प्लेयरों को बैक करते जाओ, लाइक वेंकटेश अय्यर, शिवम डूबे, जो भी है, बिकॉज यू नीड समबडी मैन हु कैन बोल बैट. यू कांट ओनली रिलाई ऑन हार्दिक. He yeah, cannot play all three formats. Develop all rounders who can bowl, man. This will help you. I'm telling yeah, you, this will help you. Australia have like 4 options. England have 4 options. Like every team has like a lot of options. You need to develop more. Kuldeep should continue in ODI. I agree. Kuldeep was always ahead in ahead Chahal in ODI. I think it was. No, the thing is, he was ahead in those one days where, like, not the full team was there. When the full team was there, I don't think he played. Like, he played in the West Indies tour, Zimbabwe tour, and stuff. But there were certain games like when now the big. I think last year the focus was on T20s. Now when you see the big players are back, now I want to see him back. If he's back when he plays the World Cup, then so be it. You're yeah, right that he. become like a replacement bowler is what you're saying, like when the big guns are on holidays, फिर वैसे जो साइड Yeah, वाली टीम होती है, वैसा अंडर धवन और अंडर समवन वैसे टाइमों पे खेला उन्हें. या वही बोल रहा हूँ. अभी रोहित इन लोग के साथ और दबा के खेलना. आई नो वेस्ट इंडीज में खेला था कुलदीप, बट थोड़ा और कंसिस्टेंट करो, स्पेशली जब टेस्ट में जो हुआ अभी, लाइक मेरे को वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ. मे बी दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग अ बिट. नहीं सही है, वो डाइजेस्ट होगा भी कैसा भाई. अब उन्हें फाइव उन्हें खुद से खुद पूछे तो उन्हें खुद फिर दैट वाज द थिंग, ही सेज दैट ही फॉट हिज कॉन्फिडेंस, इट वाज लैप्स्ड एंड स्टफ, एंड ही फॉट दैट एंड ही केम बैक गुड. अब क्या होगा भाई बंदे के साथ, जब बंदा बेचारा इतना बेहतरीन परफॉर्म करा, आप उसको बिठा दिए. इट्स जस्ट सैड. Yeah, 100%. देखो ये, डोंट वरी, कुलदीप विल बी ड्रॉप फ्रॉम वर्ल्ड कप एंड चाहल विल प्ले. नहीं, अब देखना पड़ेगा throughout the course of 10 months or 9 months left. Hopefully then we can assess better, and then there's always that IPL, and there's always like a lot of other formats that will come up inshallah. And definitely कुलदीप भाई के लिए तो दुआ है यार. अगर कुलदीप भाई आ गए तो फिर चाल खेला तो चाल को फोड़ भी सकते हैं यार. खैर कुलदीप को भी फोड़ सकते हैं, बट या गिवन कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ चाल इज मोर फोर्डेबल. अश्विन को ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए वापस ना लेकर आना प्लीज, आफ्टर आईपीएल कहीं से सेलेक्ट ना हो जाए. उन्हें दोनों वर्ल्ड कप खेला है भाई, दोनों टी20 खेला. मैं T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में जहाँ उन्हें हक दिया था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा मैच था. उसके बाद का मैच में लोग पूछे थे अश्विन को ड्रॉप करने. आई वाज लाइक डेफिनेटली नहीं करते अश्विन को ड्रॉप. वो एक्सपीरियंस बोल के खिलाते उसको. कहीं का एक्सपीरियंस बैगन बांग्लादेश में कुछ नहीं करा एक्सपीरियंस. I mean, he did bat well. 50 मारा एंड में. I'm not going to say anything, but yeah, I mean, ठीक है यार, अश्विन can bat and stuff, but ये batting का objective should be with the first 6 to 7 players. उसके बाद छोड़ दो भाई. Yeah, first, yeah, now I can see you were frozen for the last 5 minutes. Now I can see you. And
Yeah, now I can see perfect. Yeah, to wrap it up, the series, how do you evaluate it? Marks out of 10 for Sri Lanka, marks out of 10 for India. India 7 out of 10, and Sri Lanka I would say 6 out of 10. Well, fair assessment because, like, it's not like the first two T20s actually India could have lost the first one and they lost the second. Third was outstanding, so maybe I would give 7.5 or 8 just because the last match was amazing and it's a young team, they're learning. So I would definitely encourage this and try to give them an extra mark. Exactly. Tomorrow prediction: Australia win or draw. Fair saying Australia win. will. I'm saying win if they're 90 overs. What Mustafa is also going to say. No, but he asked you win or draw, so I'm saying draw because I think it. I don't know, like rain का भरोसा नहीं है. Yeah, that's why I provided 90 overs ahead. तो आप प्रोवाइड है वो तो प्रिडिक्शन कुदरत का निजाम है भाई, कुदरत के निजाम से मैं कैसे बोल सकता हूँ? धवन स्टैंटन कैप्टन को एक सीरीज के बाद बाहर कर दिया आफ्टर हिज पोर परफॉर्मेंस. Yeah, वो Also, तो age did not help him. Age was not on his side, with Shikhar Dhawan. I think the New Zealand series he was captain as well, right, Fez? He played in the New Zealand he series. I played don't know very if he was. slow. He hit like a 70, but it was like very slow performances. He was not getting quick runs, and yeah, I think age and वो 1-2s भी ज्यादा नहीं ले रहा था. बहुत चीला है भाई पर धवन भाई के साथ. धवन was ferocious back in the day, but like अब थोड़ा गब्बर शेर थोड़ा slow हो गया. Needs the Yeah. protein. For England, all 11 players can hit sixes, but our batting ends at Mavi. I think Umran and Arshdeep should practice batting so that India can play fearless batting. And I'll add to that, the top six also from England, like 3-4 can bowl. From India, they can't. So you have to also the batsmen need to bowl, the bowlers need to bat. I completely agree with you, Saib, for sure. India minus Surya is less than or equal to Sri Lanka. Faiz, your thoughts? Yeah, you could say that. I mean, but first match upon जो जीता Surya didn't perform in that, so. But also, if you see the Asia Cup, you had all the big guns plus Surya, and Sri Lanka won that game. So Yeah. it's a bit closer than you think, especially in T20s. New Zealand, Pakistan, ODI to draw. This is the comment of the stream, bro. पूछ रहे आपको. इंडिया एंड पाकिस्तान ओडीआई तो ड्रॉ तो नहीं होगा ना भाई. वो भाई कराची में आप मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाओ, बोलो ये पिच में कहाँ कुछ है, मैं जाके आपको बता देता. इतने बार वो पिच देख लिया, इतने बार कंडीशन लेकर वो तापाल चाय में जाके बैठ जाता हूँ मैं, सेंसोडाइन कैट. वही सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट है वो मैच का. समझ में नहीं आ रहा मेरे को. आई थिंक इवन साइमन डोल, उरूज और जितने भी कमेंटेटर उन्होंने भी बेजार हो गए थे वो मैच से. What about the multicolored seats? हाँ, The multicolored seats वर्ल्ड मल्टीकलर लीड्स in the Karachi stadium. अरे वो हाँ अच्छा, वो रेड ग्रीन येलो व्हाइट था. भूल गया तो सीट के कलर आता देख के बाद. नहीं वो दिमाग में सुन हो गया मैं क्या वो मैच थे. Deepak Huda hasn't bowled a single over in this series. Surprising. And Hardik mentioned in the press conference before the series that he will try him. I'm also surprised. I would have liked to see Huda bowl a few overs, man. You have to get those players to bowl. Otherwise, then, you can go with a Washington Sundar in the team. He can bat and then he'll give you a few overs. I think you need more options, bowling options, especially in big tournaments. You had Umran, you had Hardik, you had already enough. I think you didn't need Deepak Huda to bowl. So it was यही बात हो गई, right? Like at least implement it now so that you have that option in other matches where you might need a part-time player. You need a part-time You might bowler. need a part-time player, but the thing is, situation didn't call for it. I mean, agar it did, I'm pretty sure he would. You No, could like say- today, it didn't call for it at all. But you could. What was the harm giving him an over today when you were like winning the game? Yeah, that way if you're looking at it, yeah. But he did bowl the extra over as well, no? He bowled 4. Faiz bhai, tabal tea zindabad. Red color chair. Tabal chai अपन मुस्तफा भाई के तापा चाय के एग्जैक्ट टाइम पे जब आता उन्हें चाय डालती और ना चाय पीते. और ये है इसका वजह यही है, पीना पड़ेगी. देखो व्हाट इज ही सेइंग, आई हैव टू ड्रिंक इट, मतलब वी नीड टू ट्राई इट. पड़ेगी एक बार देख के गुस्सा घुस गया दिमाग में है. ये इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल, इसलिए इतना पैसा डालना पड़ता है कंपनीज को एडवर्टाइज करने अपना प्रोडक्ट. देयर वाज बैक इन इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में यहां हम लोग मैचेस देखते थे एंड द एड यूज्ड टू बी सो एडिक्टिंग. अल अदील का एक एड था और हम लोग जब मैं मुस्तफा दुबई को आए, वी सॉ अल अदील स्टोर एंड आई वाज लाइक अरे ये अल अदील वही से सो यार दे गेट इन योर हेड मैन. एंड सेंसोडाइन भी मैं अब टूथपेस्ट वही खरीदा अभी मैंने सेंसोडाइन. There's no room for sensitivity. There's no life is too short for sensitivity, so use Sensodyne. यो याद हो गया.
इसलिए इतना खर्चते हैं देखो, ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए, बिकॉज घुस जाता है वो बिकॉज़ दिमाग। मैच इंटरेस्टिंग नहीं था बॉस, लाइक वो वो इंटरेस्टिंग एक था ऐड था ज़्यादा। ना, और आशीष पूरा दिन गाते थे कौन सा किस मी, कौन सा था वो ये सब का सोनी। नहीं, वो डेयरी मिल्क का था। आई कैन भाई वो जाके खरीदना पड़ता चॉकलेट, उसके बाद एक हॉर्लिक्स का भी ऐड आता था बचपन में, वो भी जापान मेरे को बहुत जापान पसंद, या मेरे को बहुत बट पसंद था वो। अब देखो, आई वुड लाइक क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट जहाँ आप, आई एम प्रीटी श्योर हमारे इंडिया बॉयज और आपको भी याद होंगे, उंगली पे टिंगली, वो पेप्सी के जो एड्स रहते थे, वो एड्स कहाँ चले गए भाई? आजकल के एड्स तो इतने सैड हो जाते हैं, वो बुरे एड भी ऐड हो जाते हैं, अच्छे एड्स तो बहुत ही याद रहते हैं, लाइक बट क्या ही कर भाई सकते बीच हैं। में क्रेड के एड जबरदस्त थे, दे वर आउटस्टैंडिंग, इट वाज बेटर रेड देन के द तो पेप्सी एड्स, इट रेड वाज मैच में इनक्रेडिबल, राहुल द द्रविड़ जो वे गाड़ी दे, तोड़ रहा था एंड हंस रहा था, या वो नेक्स्ट लेवल था यार। that's the only time we saw him lose his cool, huh? Need Kohli to bowl, bring the fun back. Rohit Sharma, IPL hat-trick bowler, he doesn't bowl. Yeah, this is a very good point, and I completely agree. They should bowl. What is Yeah. the harm in that? And even Virat Kohli picked up a wicket in that T20 World Cup, if you remember, in the semi-final against West Indies. It's summer, mate, summer beer. Yeah, all these ads, we always look at it. The Sony Sports Network. Yeah, the मौका fells. मौका 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 कितने चिल्ला थे यार वो, यार सोनी या तो स्पोर्ट्स एड जबरदस्त, वो दिमाग में घुस जाता वो। फ्लेवर ऐड करता ऑब्वियसली, बट या बट ये पाकिस्तान के सीरीज में दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज कीपिंग अस गोइंग, आई थिंक मी एंड चिराग भाई स्पेशली एंड विनेश भाई। थापाल टी टपाल ता, थी। तपा दिया वो टी, तापाल ने तपा दिया। सॉरी। हाँ, कमेंट। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑन सोनी, पाकिस्तान टूर ऑन ऐसा सोनी। नहीं, ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑन सोनी, वैसा। यू डोंट रिमेम्बर दैट? इट वाज ड्यूरिंग द ऋषभ पंत वाली सीरीज अगेंस्ट, क्या अजीब ऐड है, 10 लोग लाइन में बैठ के एक साथ सिप मार रहे, और सब एक ही एक्सप्रेशन, इतना कोल्ड बिस्किट भी नहीं है। आई थिंक एक्सप्रेशन कोल्ड इसलिए क्योंकि मैच इतना ठंडा था भाई, मैच भी इतना ठंडा था एंड भाई लाइक पीएसएल में मैं मेरे को एक साल समझ से में ये नहीं देखने, है, मेरे को ये समझ में आया, फ्री एंट्री थी बॉस, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आके देख लो प्लेयरों को, लाइक यू गेट टू सी क्रिकेट। वो भी नहीं, अपने वाले तो अपने इंडिया में फ्री कर दो एंट्री, कैसा बैल्कनिया कूद के आए थे अपने वाले तो, इंडिया को अगर फ्री में छोड़ दिया तो। जुम्मा था भाई। But I think look, towards the end they did come. Yeah, when But they understood. overall, yeah, they didn't come, and the pitches were poor. And also Yeah, there was another reason I was reading, something to do with the outside the ground, the accessibility coming into the ground. There's some difficulty. में कहीं पड़ रहा था. That could be another reason why people weren't coming in. There was some issue. yeah, apparently entry बस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट कर दिए, क्या क्या ये कर दिए। Yeah, it wasn't just the cricket itself, it was some issues, logistics that were not being sorted out, so that was another reason. भाई मैं सुबह 3 AM तक देखता था, केन एंड साउथ ने सुला दिया। Yeah, हाँ, man, I don't know, hats off. I don't know, Ashish, how you watched it. Like, we were fresh, कॉफी पी लेके, नहा धो के, सो के, उठ के, और फिर भी नींद आ रही थी, like, गने मेरी जान सोना नहीं मसलाता, एवरी टाइम गने मेरी जान नहीं, सब सोने का देगा, सौ मार देगा, नहीं। सौ मार देगा, सौ मार रहा है इसने तो पागल। Uh, yeah, if there's anything else you wanted to add, anything, whoever's watching, thank you so much for watching. If you have any comments, questions, in the end, we'll take a few and then we'll bounce. Yeah, I think but I'm just looking forward to this ODI series, Mustafa. Very excited with this Indian Only thing. looking forward. Looking forward ही कर सकते हैं. Looking back at Hardik's performance and the team's performance. Yes, I just looked back for your convenience, but looking forward to Rohit Sharma coming back. You know, there's a lot of drama. अब बस सोचे template फिर बदलेगा, क्या होगा, कैसा रहेगा. You know, the big boys are back. I know Ashish is pumped. मेरा भाई with Virat Kohli coming back in. It's gonna be fun to watch the VK back. Hopefully he gets a century or something. I'm just waiting for a big one from the king. But yeah, अभी 3 दिन का ब्रेक है, 2 दिन का ब्रेक या 3 दिन का ब्रेक, फिर बैक टू इंडिया। मैन इंडिया अगर ज्यादा दिन नहीं खेले तो बहुत बोर मारता है ऑनेस्टली क्रिकेट में। You have the 3 1 days starting on Tuesday, and then you have the New Zealand tour as well. New Zealand will be coming to India, so there is plenty of cricket, and then Australia comes. That's the big series, the Test series. That's what people. ये ऐड बोले साई भाई, डेफिनेटली धोनी लर्निंग द हेलीकॉप्टर शॉट एंड केविन पीटर, या दैट ऐड वाज सिक। वो जबरदस्त ऐड थे Big भाई। market. एक कम ऑन इंडिया बोल के 1999 में 2000 में याद है मुझे वो ऐड, उन्हें जाली पे Yeah, चढ़ा था। बहुत yeah. से यादगार भी ऐड्स हैं, बट या मैन Wills का था नहीं वो? या तापाल का तो नेक्स्ट लेवल था। नहीं, टपाल का नहीं, विल्स का था वो जो तुम बोल विल्स रहे का हो। था, हम तो बोले दैट कम ऑन इंडिया वन वाज या विल्स Last match, लास्ट but that Pakistan won at their मैच। home was in Feb 2021. That's bad. And they Yeah, had 3 series here, man. They could have easily won it. that was poor, man. That's Like, Pakistan is it's, just and really. like you said, the draw series felt like a loss, man, especially when you're playing at home.
You need to win those series, bro. I can't wait, man. I'm just like, what ये actually ये ये याद है, मैं आशीष उन लोग को दिखाया था कनाडा में। आ रहा है पाकिस्तान ये आने ऐड को? याद है? नहीं मेरे को ये क्या है 2013 में तुम 2013 में याद है पाकिस्तान आई थी आफ्टर लाइक 5 लास्ट इयर्स सीरीज 6 इयर्स। या द लास्ट सीरीज या फ्रेंडशिप कप या कुछ था ना? नहीं नहीं नहीं, वो T20 और वनडे खेले थे उसमें। हम लोग एक साथ में भी देखे थे T20 जब मदीना से आ रहे थे, याद है? अरे वो वाली समझ गया। सीरीज ठीक है 2013 में उसमें उन लोग ऐड बनाए थे। दो ही लोग सो पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर बोलते अरे आने दो। अभी याद या आई गॉट YouTube में कोई somebody edited that, and after the series, because India lost that the one day series 2-1, I think. So they edited that. I'll send it to you. You'll watch it today. After every time Ane do, they put a wicket like Junaid getting Kohli out, getting this guy out, that guy out. उसमें था. King plays on अरे Tuesday, May 100 coming, baby. इंशाल्लाह। बट ये बैंटर जो अलग रहता है इंडिया पाकिस्तान का, दैट आल्सो एड्स टू द फ्लेवर। ये न्यूजीलैंड में वही बोल रहा था, न्यूजीलैंड वाज टू जेंटलमैन ऑफ अ टीम, दे डिडंट स्लैश, दे डिडंट डू एनीथिंग, गुड बॉयज गुड फैमिलीज वैसा सिचुएशन था न्यूजीलैंड का। यू गॉट टू बी राउडी बॉयज मैन, यू गॉट टू स्लैश। ईशान किशन विकेट के सामने व्हेन आई थिंक राजापक्सा केम इन द सेकंड ओडीआई, लाइक हां वो चोक करेगा वहां पे, वहां चले आओ, वो चोक करेगा और चोक करेगा। ये चीज Yeah, क्रिकेट मैं में बहुत नोटिस कर रहा था है। यार। ऋषभ पंत भी वो जबरदस्त करता है बिहाइंड द विकेट्स भाई ऑलवेज। शाकिब भाई को खेलने तो थोड़ा, शाकिब भाई को खेलने तो थोड़ा, लाइक इट्स Fox फन। Cricket became a huge fan of him, man. You know, वो stump mic का उन लोग का segment था, they would always put it on when Rishabh Pant is keeping, especially to the spinner, like to Ashwin or whatever. And उसका fan बन गए थे उन लोग, like Rishabh Pant का, especially when he was talking behind the stumps, his commentary. एक shot Warner के साथ देखा था अफगानिस्तान के मैच में जिस पे आउट हुआ था। कौन सा शॉट? उनका देखता था कौन सा, एक याद नहीं आ रहा। I याद mean, नहीं आ रहा। But anyways, maybe yeah, but yeah. I think that wraps it up, Fez. It's been a good hour, 20 minutes, good discussion. We will. When is the match? On Tuesday, Then you said, right? So Monday we we'll come do. back tomorrow because we have to preview if there is any preview left. If there's no rain, hopefully Australia and South Yeah. Africa. Otherwise, Monday we'll preview the. Monday we'll preview the India versus Sri Lanka ODI series. That will be fun. Predicted 11s. Rohit Sharma back at the wheel. Virat Kohli back, in the batting lineup. It's going to be fun. There will be pressure on them now, especially with the young team winning the T20s. There will be a bit of pressure, but they should enjoy themselves. And it's looking forward. Now you're in 2023. This is the year of the World Cup. Your plan starts here. You have Australia. to start planning, and you have to take every series, seriously. Also, at the same time, injuries you have to rotate, and yeah, man, it's this is World Cup year. Keep the template, rotate the team. Yeah, it's like that. Yeah, rotate the team and thing. 50 over generally India, it suits them more compared to other formats, but the last series against Bangladesh was shocking, so you don't want to repeat of that. T20 में देखना पड़ेगा, मेरे को याद Besides नहीं आ World रहा। Cup against Naveen ul Haq is what Dinesh was saying. Maybe it's that shot. या मेरे को याद नहीं आ रहा भाई। Even though ये वाला T20 World Cup, the one Rashid Khan smashed it, that innings, that match, maybe I The don't one remember, there. man. जिस पे आउट हुआ था, हाँ उन्हें कुछ there was something funny. He I don't remember. Yeah. Now thoda yaad aa raha. I'll go and see it, then I'll remember. Yeah, this World Cup. Yeah, World Cup में Australia, Afghanistan जब राशिद खान smash हाँ किया याद था नहीं आ रहा मेरे को। at Adelaide. Adelaide. Yeah, Faiz, we'll wrap it. Yes, sir. We'll wrap it and we'll come back and unwrap it on either tomorrow or Monday. Yeah. Or Monday. Yeah, Monday we will look forward to the India versus Sri Lanka one-day series. Also, there's a lot of T20 leagues starting, by the way. There's the South Africa T20 league. Rashid Khan has joined the Mumbai Cape Town, MI Cape Town, and there's MI Emirates, Mumbai Indian Emirates or something. The Dubai one. There is Dubai Capitals, who are the Delhi Capital franchise. So the Dubai League, SC T20 League. We have the under-19 Women T20 World Cup starting 14 Jan, I think, and then you have the BPL Bangladesh Premier League has started. I sent you something. Did you see Saqib ul Hasan again added with the umpires? फिट जाती है यार उसकी हर 2 मिनट, मेरे को समझ में नहीं आता। स्पेशली ऐसे लीग्स में जब कोई भी नहीं दिख रहा। वर्ल्ड कप में इतना मतलब मैच्योर विराट कोहली को बोल रहा क्यों प्रेशर कर रहे हैं अंपायर को, ये उन्हें जाके इन्हें तो ही डजंट होल्ड बैक ब्रो। साकिब when he gets angry एकदम फिट जाती है उसकी। Jofra is back. Yeah, Jofra is back where? I don't know. I think Anshul bhai wrote Jofra is back.
Don't Uh, unwrap it on the podcast. डोंट अनरैप ऑन द पॉडकास्ट भाई आशीष आप सुबह का देखो एपिसोड फिर इसके फीमेल फैंस भी आ गए थे देयर वाज लॉट ऑफ पीपल मेरे जॉइंड अस फीमेल फैन नहीं थे, प्लीज लेट्स नॉट मिसलीड दैट। तो कौन कौन की थे फैंस को बड़ा ह्यूज फैन फैंस भाई देखो इसके भाई कॉन्फिडेंस अब में पानी जाके नहीं कमेंट्स पढ़ो, मुस्तफा 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 भाई मुस्तफा इसलिए बंद ही नहीं कर रहे मुस्तफा पॉडकास्ट बंद ही नहीं कर रहे पॉडकास्ट वही है कि भाई वो जो दोपहर की पब्लिक का है इन लोग को तो रोज दिखते दोपहर की पब्लिक है मेरा जैसे नहीं आई लव यू गाइस आई लव आवर रेगुलर्स आई लव हूएवर कम्स ऑन Yeah, बट exactly. वांट्स अ We बेटर all love that, and नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप क्या तो भाई शर्मिंदा कर देखो रहे हो। आप बस एकदम से आ गए थे सब विनेश भाई आप थे हमारे साथ आप भी बोलो थोड़ा मुझे बैक करो कैसे थे पूरे फैज भाई के फैंस मेल फीमेल सब थे आज तो नहीं आ, थी। yeah so fast I was talking about the various leagues starting so it'll be fun man like I don't know how it's going to work because the players are spread out but you will watch certain matches for certain players especially with the IPL coming up you will be interested I'm sure how certain players perform I will be excited for some of the games but of course there's so a lot of cricket so it's going to be difficult to cover it all but we will and hopefully we'll get Ashish on Vinay on we'll get Punter on we'll get Abrar Ryan all these guys who can give us like we'll try to dedicate certain series to certain people because there's so much cricket man ये बात I love whoever. Okay. No, I didn't mean comes like that. I mean COMES. That's the dirty one. I didn't mean like that. Just to clarify, bro. I'm with Faiz bhai. Ladki needed in life. Yeah, man, you need some chicks. तुम्हारे Yeah, some chicken proteins. को क्या कमी है भाई तुम कौन से बिल्डिंग में किधर है कौन सी जगह में दुबई में क्या है तुम्हारे को क्या अरे कमी है खाली गाने डालते जा रहे हैं, खाली always गाने window shopping bro always window shopping में चलो वो तो क्या अब कल या परसों मंडे तो प्रीव्यू लेके आएंगे आप लोग जुड़िए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग अस वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी विल कैच यू वेरी सून दैट्स मी Mustafa, Ismail, and Festa are signing off. And yeah, take care, guys. Have a good night and enjoy the rest of the week. Kai.